Start kar? Okay. Honorable dignitaries, respected teachers, and my colleagues, a very good afternoon to one and all. Well, as Albert Einstein once said, I am neither clever nor specially gifted. I am only very, very curious. So let's just keep our curiosity up during the whole session. Ask questions, share your views, experiences, and enlighten us with your wisdom. With this, Okay. 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 With this, I, Dr. Shubhra Srivastav, would like to invite Professor Ved Prakash sir to come on the stage and invite and welcome our dignitaries. Thank you, Subra. At the outset, on the occasion of World Sepsis Day, Department of Pulmonary and Critical Care Medicine, in association with National Academy of Medical Sciences, organizing the Sepsis Update. I welcome you all the dignitaries, to this program, and we have done this program on dual basis. One is the link. We have shared Google link and YouTube link to the 5,000 faculties across the globe. So the reach of this program, apart from the public domain, as you all know about the crisis, the ongoing crisis of misuse of antibiotics and the measures taken to recognize the sepsis at the earliest, and taking all the measures to manage sepsis effectively is the real challenge. We all are facing these challenges in day-to-day practice. In all ICUs, this is the universal phenomena. So I welcome you all in this program. Thank you for coming. We have Dr. Vikram Singh as first session because Professor Malviya has requested to shift his session in afternoon. He is having some issues with flight, so he will reach in afternoon session. So we will start Dr. Vikram's session first. So welcome you all. Thank you. I would like to invite chairpersons for our next session. Dr. Avinash Agarwal sir, Professor and Head Department of Critical Care Medicine, KGMU. Dr. S.K. Sonkar sir, Professor, Department of Medicine, KGMU. Dr. Sai Saran sir, Assistant Professor, Department of Critical Care Medicine, KGMU. And Dr. Durgesh Pushkar, Assistant Professor, Department of Nephrology, KGMU. Now I would like our chairpersons to invite our speaker for the first session. Good morning, everyone. Today, the first speaker is Dr. Vikram Singh. He is the HOD Internal Medicine from RML IMS, and he is ex-assistant professor from Department of Medicine, AIMS Jodhpur, ex-assistant professor Srinagar Garhwal, and ex-fellow rheumatology, Singapore General Hospital, Singapore. And his area of interest are rheumatology, diabetes, and infectious disease. And he has more than 20 international publications and awarded various global research scholarship by
American Diabetes Association. Dr. Vikram Singh, please. His topic for today's presentation is approach to acute kidney injury in sepsis patients. Good afternoon, everyone. Today we will discuss sepsis and AKI. Move नहीं कर रहा. As we know that in most of the patients who are having a sepsis, we always see that there is some renal abnormality there, and as a result, almost 1/3 of the patients who are having a sepsis develop AKI. The annual global incidence is around 6 million cases, and especially in ICU setting, 50%, half of the patients develop AKI. And the importance of the AKI is that it leads to longer hospital stay and death also. However, the issue is how do we define the AKI and how do we define it is a sepsis induced AKI. AKI we know that is defined that if there is a within hours there is an increase in the serum creatinine level or a decrease in the urine output. But this definition that we know about the AKI has again few problems. For example, the serum creatinine, because we don't know what is the baseline of the patient, that is the first problem. Then when the patient is in sepsis, there is a blood flow that decreases from the muscles to the vital areas. So rise in the serum creatinine is hampered. Then we give fluids that also creates the dilutional. Then other definition, decrease in urine output, because most of the times we start diuretics. So actually the definition is a clinical one, and we only diagnose patient with AKI as a clinical diagnosis. These are the limitation of definitions we have already discussed. The issue is whether sepsis is causing AKI or AKI is causing sepsis. Again, there is a certain issues because there have been few studies in which 40% of the critically ill patient develop sepsis after AKI. So whether sepsis is causing AKI or AKI is causing, but more or less we can say that it is a sepsis in which almost 1/3 of the patient develop AKI. What is pathophysiology of this AKI? As we all know, we have a general tendency that when there is a decrease in the renal perfusion, and that decrease in the renal perfusion because of sepsis, because of the shock, this will lead to the AKI. However, the current line is a unified theory which unifies the inflammation, microcirculatory dysfunction, and metabolic reprogramming. What are these terms and how it causes AKI? Whenever there is a infection, the infection leads to the certain interleukins, and these interleukins leads to the tissue damage, and this tissue damage releases damage associated molecular proteins and pathogen associated molecular proteins,
And once these proteins are released because of the infection and inflammation, they also reaches to the through the hematological dissemination to the glomerulus, and also reaches to the tubular epithelial cells. And in the tubular epithelial cells, there are certain receptors where they act. They are basically a toll-like receptors, and these toll-like receptors then again leads to secretion of the many pro-inflammatory mediators. And as a result, cascades of the endothelial damage, increased permeability of the vessels starts, a process of platelet aggregation activation starts, microthrombi starts forming, which hampered the blood supply, as well as the blood supply in the peritubular vessels is hampered. Along with increased permeability, there is a more fluid accumulation in the interstitial space, less oxygen is reaching to the tubular epithelial cells, again more and more damage to the because of these cascades. And all these things ultimately leads to the acute kidney injury. Apart from this, it causes not only the microcirculatory dysfunction, but there is also metabolic reprogramming, which state once a cells have a limited energy, then the replication of cell is hampered. And because of the hampering of the replication of the cells, there is a cell cycle arrest. By the way of all these pathogenesis, there are certain, why this pathogenesis is important? Because as such, we should not be very much concerned about the pathogenesis, but these pathogenesis leads to the secretion of certain molecules. And if we can identify those molecules early, then we can diagnose a patient who is susceptible for the AKI, we can know, and the person who has developed AKI, we can know, and what will be the prognosis. Apart from this, these pathogenesis is also helps whether the AKI is because of the tissue damage or what is the etiology. These things we can identify with these molecules. So this was in pathophysiology we have already discussed. Now, because of these pathology, what are the biomarkers that are released? And what is the importance? As we all know that AKI is not a sudden process, rather than it is a evolving process. So once the kidney is normal, then there is a kidney is at increased risk. There will be the AKI, there is a damage to kidney, along with the decrease in GFR, kidney failure and death. Therefore, if we can identify when the kidney is in susceptible state, then those biomarkers help us to intervene early. Similarly, when the kidney is in bit advanced stage and what was the cause of that damage by those particular biomarkers, then we can be more wisdomful in our management. So what are the markers? We all know that there are few markers like the NGAL, cysteine C, and they are quite specific markers. And when NGAL and cysteine C is measured in the urine, it has a more specificity as compared to the when it is measured from the serum level. And generally, it raises from 7 to 24 hours, because after that there will be more and more damage. Then there is no use of all these biomarkers. The advantage of these markers is not only they tell us that this kidney is susceptible, but they also help us to identify where there is a damage to the glomerulus, where there is a damage to the proximal tubule, distal tubule or collecting tubules. Like when the ischemia, then NGAL is increased. If there is a cell cycle arrest, then insulin-like growth factor binding proteins are increased.
So there are certain markers which help us to know where exact tissue etiology is going on. Now we know what is the pathophysiology, we know what are the biomarkers, we all know. But how we can prevent it? For the prevention, there is a term acronym which can consider as a STOP. That is we have to intervene for the sepsis, because all we know that it is a primarily sepsis which is inciting the inflammation, and inflammation is leading to the cascades of the event at various cellular levels. So immediately we have to identify if there is sepsis, start appropriate antibiotics to decrease the inflammation. We have to avoid certain toxins. For example, very commonly in the wards we give painkiller like the non-steroidal anti-inflammatory drugs. If the patient is having a GI infection, most of the time aminoglycoside have been started. So aminoglycosides, vancomycin, amphotericin, antifungal, especially which are the drugs which are used in ICU setting, we all know that they are a nephrotoxic, so we should avoid using them. O is for optimization of the blood pressure and the volume. This is a very easy term that yes, we all know that we have to optimize the blood pressure. But for the all practical purpose, we know that once a resident writes that this amount of fluid is to be given to the patients, but we know that most of the times around 30% of the 40% is delivered to the patient, and we never bother about it because we are thinking that we have written this amount and it is going on, but actually that is not the case, and many times we miss it. So optimization of the blood pressure, what is the urine output? In daily rounds we don't ask what is the urine output, we don't order our सिस्टर्स एंड इंचार्जेस की यूरिन आउटपुट भी मेजर करना है, और वो कर भी रहा है तो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं. बट दैट आर द वेरी क्रिटिकल प्रैक्टिकल लेसन्स विच हैज़ टू बी एड्रेस. सेम टाइम्स many times patient is lying, patient is having sepsis and AKI, he was also taking antihypertensive. We don't bother, we don't change the dose because the patient is sick. Residents or sisters don't go to measure the blood pressures. So these are the practical things which has to be taken care by the resident if we want to properly manage the patient with sepsis and AKI. And then prevent any harm. That is harm. We all know that AKI leads to the hyperkalemia leads to the pericarditis. So all the complications has to be addressed. There have been certain that we should make a protocol for the fluid management or a bundle of regime, but there have been studies like the process, arise and promise, which have shown that there is no advantage of the protocol-based management. There have been no mortality benefit, and there is no need, and it has not also deterred the renal replacement therapy. Which is the best fluid? The best fluid should be isotonic balanced crystalloid, that is a normal saline, and the ringer lactate. The studies have proven that they improve the mortality. Many times we also give, because we know that if there is we need to increase the renal perfusion, we give albumin. Yes, albumin do help, but hypertonic albumin should not be used because it harms. That is a 20% albumin. If we have to raise the blood pressure, the agent of choice is norepinephrine. In pharmacology books, we read that dopamine has a renal vasodilatory properties, but no studies have shown that it helps.
vasopressin does not increases the risk of AKI. So the drug of choice will be norepinephrine. If the patient is in AKI, should we proceed for the early renal replacement therapy or delayed renal replacement therapy? It is a question. Sometimes we assume that if we start early renal replacement therapy, it might help the patient, but there have been many studies, but the conclusion is that there is no difference in mortality whether you start the early or late. We all know what are the indications for the renal replacement therapy. So what should be the future of the managing of the patient with the AKI? Any volunteer? How should we start treating these patients? Any resident? The basis was that all AKI is developing because of the sepsis. Sepsis is causing inflammation relating to the pro-inflammatory state, activation of the toll-like receptors. So if we do hemoperfusion, that may decrease the bulk of the inflammatory mediators and that may decrease the incidence of AKI. But the studies have shown that if the high volume hemofiltration is given, it has not decreased the mortality and there is no survival benefit. Then in Japan, there has been a few case reports that if absorption therapy by the way of polymyxin hemoperfusion can be given, so that again it will inhibit certain infections, but these two experimental therapies have also not helped. So in summary, whether it is sepsis that is causing the AKI or it is a AKI that may lead to the sepsis is a bit controversial thing. However, in most of the patients who are having a sepsis, 1/3 will land into the AKI. 50% of the patient in ICU will develop AKI. The pathogenesis is infection and then inflammatory cascades, which is affecting the renal tubular cells, which is affecting the micro blood circulations at the renal sites and the metabolic reprogramming. These need to be addressed. However, the exact pathology is not known, so the treatment more or less will be focused for the acronym of the STOP, and we should be meticulously follow the STOP acronym for the prevention of the AKI. So, Dr. Vikram has covered the topic of acute AKI with sepsis so thoroughly. Now we can take only a few questions because our Honorable VC Madam will be reaching soon. So we have to proceed for preparation for inaugural session. So we can take one or two questions quickly. So any drugs or like N-acetylcysteine which we give patient undergoing contrast, so any drug, glutathione or any antioxidant IV drugs can be given to prevent this inflammation or to stop this inflammation? Because Sir, you told the dialysis that form hemoperfusion is not acting. So what about any IV drugs? Sir, at cellular level, it is that when there is a obstruction of the micro circulation, it creates a state of the oxidative stress. And there have been few case reports like if we decrease the oxidative stress, it might help. But still, there is no recommended drug for this.
We still use N-acetylcysteine, glutathione, but it is also, again, it is not recommended. It has not been validated by the trials. Yes, sir, AKI, because more or less AKI takes place because when there is a inflammatory changes in the glomerulus and there is a activation of the toll-like receptors in the tubular epithelial cells. Once it has been activated, it will lead to the secretion of the inflammatory interleukins like the 6, 10, 18. And then a process of, once it is in the glomerulus, there is also blood flow is there, and it is a bicyclic process. It leads to the sepsis. Yes, sepsis. सर मैं डॉक्टर देवेश कुमार श्रीवास्तव, मैं ये पूछना चाहूँगा कुछ ऐसा आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट भी है जिससे लोगों को हम बचा सकते हैं या प्रिकॉशनरी कुछ कर सकते हैं? सर आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट तो जरूर होगा क्योंकि पहले टाइम में लोग बचते थे, ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है कि जो हम लोग ने जो पढ़ा है उसमें आयुर्वेद नहीं पढ़ा है, तो इसलिए मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन डेफिनेटली इट वाज अ साइंस. हमारी जो साइंस है वो पिछले 150 सालों में आई है, वो भी साइंस पिछले 5000 सालों में थी, तो दैट इज़ अ साइंस. इट मे बी हेल्पिंग बट वी नीड दैट टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल पीपल एंड वी नीड दैट टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल टू ट्रीट इंडिविजुअल्स. थैंक यू सो मच सर. मैं आयुष डिपार्टमेंट से सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर देवेश कुमार श्रीवास्तव बोल रहा हूँ. तो मैं आज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूंगा आप लोगों को कि कैसे जो है आयुर्वेद से कैसे हम सेप्सिस और सब लोगों को सारे डिसीज़ को कैसे कवर करते हैं. थैंक यू. Vikram, thank you. Very good presentation. So you one of your slide that showed about the dopamine, and you said that dopamine is written in the book of pharmacology. We have little experience, है ना? At very low dose, it acts as a vasodilator, and that is used in renal transplant surgery for the perfusion of the kidney. At a high dose, it is a vasopressor. Sir, actually, when we were also resident, we used to follow this. But if you read the literature, then it says that it does not have any advantage. So, Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Vikram. Thank you very much. Thank you all the chairpersons and Dr. Vikram Singh sir. That was quite an informative session. Now moving ahead, we'll be starting our inauguration ceremony as our chief guest, Honorable Vice Chancellor Ma'am has arrived. Rest all the sessions will be held after the inauguration ceremony. We'll be starting the inauguration ceremony in 10 minutes. अभी सर काम ये सामने ये भी तो हटेगा बैनर. ये लैंप लाइटिंग वाला लैंप उधर जाएगा. कहाँ जाएगा? दूसरा माइक लो. ओ दूसरा पोडियम माइक लो.
हेलो, माइक काम कर रहा है? 1 नंबर 2 नंबर मिक्सर से। हेलो 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 हेलो, बस ठीक है। गा के छोड़ देना, ठीक है? जल्दी शुरू करना, जैसे ही यहाँ से उठना शुरू हो जाए शुरू कर देना, जैसे ही बंद हो जाए बंद कर देना, जल जाए जैसे ही ओके ठीक है सर डाइस पे नहीं है। ओके पर उन्हें बोल डाइस पे इतना ही आप अपने वो कट शॉर्ट कर लीजिएगा, वो दो पैराग्राफ मोड़ा ठीक है, थोड़ा मोड़ा बोल के डिपार्टमेंट से उसी के विश्वजीत सर को क्या बुलाना है? नहीं शूट करता है, चेंज हो गया क्या है करना मेरे सर भी 5 ही होंगे, कितनी सर्कल से देखा तो बस बुला लेंगे, जिस तरफ से कहना बुला लेंगे, टाइम नहीं है ना कुछ करने का। क्यों अरे भाई वैसे भी इसको बुलाने का तो देखिए वैसे भी कराने के लिए अनाउंसमेंट चल रही है कैंडल वाला, हम लोग पटाखे आ जाएंगे।
Honorable dignitaries, respected teachers and my colleagues, a very good afternoon to one and all. On this day of World Sepsis, Department of PCCM KGMU celebrated to raise the awareness about life-threatening condition called sepsis. We will begin the inaugural function by inviting on his stage our esteemed dignitaries who have joined us here. Now we request our organizing secretary, Dr. Ved Prakash sir, to facilitate our esteemed dignitaries with saplings. First, I request him to facilitate our chief guest, Dr. Sonia Nityanand ma'am, with a sapling. I request him to facilitate our Pro VC, Dr. Vinny Sharma sir, with a sapling. I request him to facilitate our Dean, Dr. Amita Jain ma'am, with a sapling. I request him to facilitate our organizing chairman, Dr. Rajendra Prasad sir. Now, as according to our tradition, may we request our esteemed members seated on the dais to kindly inaugurate the event formally by lighting the auspicious lamp. Let's pray to God that we may continue to burn the auspicious light that may bring in happiness, prosperity, and health. Ya kundendu tushare hare dhavila, ya shubhravastravita, ya veeda varidand mandit kara, ya shwet padmasana, ya brahma chut shankara प्रभतिमी देवे सदा वंदिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्या पहा शुक्लां ब्रह्म विचार सार परिमा आद्या वीणा पुस्तक धारिणीं भयदां जाड्यांधकारां पहा हस्ते स्फाटिक मालिकां विदतीं पद्मासने सांसितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धि प्रदां शारदां. Thank you for this beautiful recitation of Saraswati Vandana. Now, I would like to invite our organizing chairman, Professor Rajendra Prasad sir, to kindly give the welcome address. Good afternoon. Chief guest of today's this World Sepsis Day function, the Vice Chancellor of this university, Madam Sonia Nityanand, other dignitaries on the dais, off the dais, ladies and gentlemen. As organizing chairman, this World Sepsis Day, I welcome you all for this function. You know, the sepsis is a word which is supposed to be very lethal word. It's because of the infections. It may be bacterial, viral, fungal. You have seen COVID.
deaths because of sepsis. One of the reasons for is sepsis. I think prevention, to me, it looks like prevention is a very important. If you prevent these infections by vaccination, by other things, we know. And then ultimately making awareness about this sepsis, why it is caused, how it is treated, and how it is prevented. To me, it looks very, very relevant today. And I wish to congratulate Dr. Ved, who has organized this, I think, World Sepsis Day in this Department of Pulmonary and Critical Care Medicine. While coming here, I was talking to Madam Sonia Nityanand that this is away from World Sepsis Day. I had 3 dreams in my life. One dream was when I joined this department of tuberculosis at that time, way back in 1976. Then my dream was that to convert it into Department of Pulmonary Medicine. So I was very happy to convert it in 2005. In 2005, our department name was changed to Department of Pulmonary Medicine. Then I had another dream that to also have facilities for critical care medicine in the pulmonary medicine and in other departments also. And I must thank Ved that he has been my student and he has done this. And he has created this department. And my third dream is still not fulfilled in Lucknow. Then my third dream was DM Pulmonary Medicine, which again has been done at 2 places in Lucknow. And I have requested Sonia, even when she was director, still she's the director of RML Institute, that why not, since it is a super specialty hospital, why not to think of starting DM in pulmonary medicine? And my last dream, which still has to be fulfilled, I hope everybody sitting on the dais will support me, that we should, although lung transplant has been our dream. I still remember Professor Hari Gautam, when he was Vice Chancellor, I presented my department and I said to him about 2 dreams, starting DM Pulmonary Medicine and starting somehow a lung transplant in this part of the country. Although it is happening in other part of the country, but in Lucknow, I hope when Dr. Sonia Nityanand joined, I heard his statement that she has also dreamed to start a lung transplant in Lucknow. I think Dr. Ved, I would request you, and because he has been trained, so I would request that this department should initiate to bring lung transplant in this part of city. I think with these few words, I welcome you all to the World Sepsis Day. Thank you very much. Thank you, sir, for sharing the insight. Now, as we are running short on time, may we invite our chief guest for the event, Dr. Sonia Nityanand ma'am, Honorable Vice Chancellor KGMU, for her blessings and message. Dr. Rajendra Prasad, the organizing chairman, Dr. Sharma, the Pro VC, Dr. Amita Jain, who is the Dean Academics, Dr. Ved Prakash, the organizing secretary, all other esteemed faculty members from all the 3 institutes I can see, from KGMU, from RML IMS, and from SGPGIMS, and all other staff of King George's Medical University, and the participants, both online and who are physically present here. First of all, a very warm welcome on the behalf of the King George's Medical University to this update on sepsis, which I think is very, very important for any clinician. At the outset, I would like to congratulate Dr. Ved Prakash and his team for organizing this update.
I would like to begin by answering Dr. Rajendra Prasad on his 3 dreams. That your first dream was of pulmonary medicine and a DM in pulmonary medicine. So it's there in 2 institutes, and we do hope that it will also get started in RML IMS, because the new hospital, the 730 bed hospital that we have proposed in RML IMS, we have made sure that 1 floor is for respiratory medicine, which is a mandate for MBBS, and apart from that, there is a floor which is for pulmonary medicine, because to start DM, you have to have a minimal faculty strength and a bed strength. Your second dream about critical care medicine, again, there are KGMU and SGPGIMS have a very good, robust critical care medicine unit, and to some extent in RML as a part of anesthesia. But what we've recently done is that at RML, there is a funding which we've got from NHM for a 100-bed CCM. So that is on its way. The DPR has been prepared, it has been submitted to the government, and the way we have envisaged that it will come up in the Shahid Path campus, the RPG hospital. So part of that CCM will be dedicated for maternal and pediatric CCM also, And your third dream about, so that's a big development because we're getting the funding for a 100-bed CCM from NHM, And your third dream about pulmonary transplantation, the most difficult dream and the most, I would say, the most visionary dream for today. So I must let you know that Professor Ved Prakash from King George's Medical University has taken a lead role in this, and only 2 days back, he came up with a very detailed proposal on lung transplantation at the King George's Medical University, and we've submitted to NHM, and they in turn will be sending it to the Government of India, and it's proposed as a part of the transplant setup in KGMU, where the kidney transplant and liver transplant, as an addition to that, the lung transplant has been proposed. So I hope, it's not just getting the money for the infrastructure and the equipments, but it is even more important that we get we have some of the manpower which is trained in it, but it is more important to have a very good team for any transplant program. I mean, I know that it's very important to have a very good team, multidisciplinary team. So that much about your dream, Dr. Prasad. We value you as a teacher, as a senior. Coming back to this update on sepsis, it's one of the most common, what I understand is that it's one of the most common cause of deaths in the world, and a lot of children are affected by it. 40% of cases are children under 5 years of age, and 80% of sepsis cases occur outside a hospital. So it's a very, very important cause for morbidity and mortality. And what better way than what Dr. Rajendra Prasad highlighted to prevent it? Prevention is more important than actually letting the disease occur. So one is the preventive aspect, which I'm sure will be covered in the update today. The second is an early diagnosis, which again I think, with the biomarkers which are coming up, and apart from the clinical signs and symptoms, the early detection of sepsis is a very important factor, so that you can nip it in its bud before it flourishes and produces hemodynamic instability. But for a person like me, what is most alarming in sepsis is the emergence of drug-resistant organisms, the MDROs, which are emerging and which make sepsis very difficult to treat. Because no matter what antibiotic you use, sometimes the bug does not respond to the antibiotic that has been used. So a large part of our curbing sepsis and awareness about sepsis should also be on how to prevent and how to curb the emergence of these multi-drug resistant organisms in sepsis. So I do hope, Dr. Ved Prakash, that this update is fruitful
people gain, all the participants gain from it, and you organize more such updates in the future. And I would like to thank all the faculty which have come from the different institutes for coming and sharing their expertise in this update. Thank you very much. Thank you so much, ma'am, for this wonderful talk. Now, I would like to request Professor Ved Prakash sir to felicitate our dignitaries with mementos. I would like to request Dr. Sonia Nityanand, ma'am, Honorable Vice Chancellor, to come forward. Now, I would like to request Professor Vinny Sharma, sir. Okay. Now, I would like to request sir to honor Dr. Amita Jain, ma'am. Now I'd like Rajendra Prasad sir to come on the stage and honored by Professor Ved Prakash sir. Okay. Okay. It's one minute. Now I would like to request our VC ma'am to felicitate our HOD sir. Now I would like to invite Professor Ved Prakash sir, Organizing Secretary, Head of Department, Pulmonary and Critical Care Medicine, to give vote of thanks. Thank you, Subra. At outset, I will thank our motivation and ray of hope to all the faculty, and student, and all the staff of King George's Medical University, our Honorable Vice Chancellor, Professor Sonia Nityanand ma'am. बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे, जबकि आज मैम की मीटिंग थी राजभवन में, तो सारे प्रोग्राम रीशेड्यूल हुए। मैम बहुत ही मुश्किल से, मैं समझ सकता हूँ कि कितना टफ था उनके लिए ये समय निकालना यहाँ के लिए, लेकिन फिर भी उस कमिटमेंट को उन्होंने पूरा किया है। जो कमिटमेंट अपग्रेडेशंस और अपडेशंस से जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं कि मैम ने ज्वाइन करते ही, शायद जब तक ज्वाइन भी नहीं किया था तभी हम लोगों ने स्टेटमेंट पढ़ा कि लंग ट्रांसप्लांटेशन विल बी द रियलिटी इन उत्तर प्रदेश। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मैम
कि आपने इस इनिशिएटिव को लिया है और हम लोगों पे जो भरोसा आपने रखा है। मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम लोग रात और दिन पूरी मेहनत करेंगे, ईमानदारी से मेहनत करेंगे और आपके जो अपेक्षाएं हैं उन पर खरा उतरने की कोशिश हम लोग पूरी टीम की तरफ से, पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। सर्जिकल टीम की तरफ से भी आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सभी लोग रात और दिन आपकी लीडरशिप में, क्योंकि HLA, क्रॉस मैचिंग और इम्यूनोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल लंग ट्रांसप्लांटेशन में है, तो आपके गाइडेंस में हम इस ड्रीम को अचीव कर पाएंगे, इस तरह की मुझे उम्मीद है। और लगातार हम लोग आपकी अपेक्षाओं पे खरा उतरने के लिए रात दिन मेहनत करने के लिए तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपको आने के लिए, हम लोगों को एनकरेज करने के लिए। प्रोफेसर विनीत शर्मा सर हमेशा ही ब्रिजिंग का काम करते हैं, वाइस चांसलर मैम और हम लोगों के बीच में। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस ऑलवेज सपोर्ट अस एंड ऑल द ग्रेटर कॉज, you are always with us, sir. Thank you for being with us. Ever smiling and ever I can say कि जो हम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हमेशा रहती हैं। रिसर्च का जब भी हम लोग कहीं फंसते हैं तो मैम को याद करते हैं। ऐसी हमारे डीन एकेडमिक्स प्रोफेसर अमिता जैन मैम हमेशा ही अपना सपोर्ट एक्सटेंड करती हैं डिपार्टमेंट को। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैम कि शॉर्ट नोटिस पे आप हमेशा हमारे साथ होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे टीचर्स ऑफ टीचर, जिनको हम लोग ट्यूबरक्लोसिस से पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर तक का जो सफ़र है उत्तर प्रदेश में ही नहीं, मैं कहूँगा नॉर्थ इंडिया में, उसको सेव करने वाले, ड्रीम करने वाले और आगे का ड्रीम उन्होंने शेयर कर ही दिया है। ऐसे हमारे प्रेरणा स्रोत जो हमेशा ही हम लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित रहते हैं। विभाग के जितने भी कार्यक्रम होते हैं आपने देखा होगा, हमेशा ही उनका सहयोग, आशीर्वाद और प्रेजेंस से हम सब लोगों को मार्गदर्शन मिलता है। आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं सर। आपको कितने अवार्ड्स की लिस्ट होगी, BC रॉय अवार्ड से लेकर के, और कितने, तो बड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन जितना मार्गदर्शन इन डिपार्टमेंट्स को लाने में आपने रखा है सर, ऐसा ही मार्गदर्शन आप हमेशा देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमेशा हमारे बीच होते हैं। प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सर, टीचर ऑफ टीचर्स, हमारे विशिष्ट अतिथि जो कि नेफ्रोलॉजी के हेड हैं, प्रोफेसर, अभी कमिटमेंट है, मैम को जाना है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप सब ने हमारे बीच में आकर के इसको आगे बढ़ाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम को छोड़ Thank you, sir, for such kind words. Now, shall we all stand up for national anthem? मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Thank you everyone. Now I'd like to request you all to kindly be seated. We'll be moving on with the next academic sessions in 10 minutes.
हाँ इसी में एक ही फोल्डर में करिएगा। किस में करें बताइए? वहाँ डेस्कटॉप बना हुआ है। स्लाइड शो स्टार्ट।
इसके बाद लेक्चर कौन सा है? आपका ये है, ये वाला नहीं, एक्चुअली वो फॉरेन चेंज होने लगा ना, वो आ गए थे और यहाँ पे अभी करवा So moving forward where we left, I would like to invite chairpersons for our next session. Dr. N.B. Singh Sir, Senior Consultant from Civil Hospital. Dr. D.K. Verma Sir, Senior Consultant from Civil Hospital. Dr. Shiv Sagar Gupta, Senior Pulmonary Consultant, Lucknow. And Dr. Ambuj Yadav, Assistant Professor, Department of Internal Medicine, KGMU. I would like to request our chairperson to invite our speaker for this session. हेलो चेक और बोला हेलो चेक Again, welcome you all. I would like to request next speaker, Dr. Professor R.K. Singh. He is head of Department of the Emergency Medicine from SGPGI, Lucknow. He is going to talk on biomarkers in sepsis. Dr. R.K. Singh, sir, please start your session.
स्लाइड आगे बढ़ेगी। कौन से इससे कर देंगे, इससे आगे हो जाएगी। हाँ, इससे सर आगे जाइए। इससे हाँ सर, अभी एक सेकंड, ठीक है, ठीक है। एक कर्सर जा रहा है आपका हाँ मेरा कर्सर जा रहा है, एक बार टाइमर स्टार्ट कर दो सर। टाइमर? अच्छा ठीक आगे। है। जी सर, स्लाइड बस से ठीक। चेंज। इससे हो जाएगी आगे, बस इससे ठीक भी है। कर सकते हैं ठीक। सर, इससे नीचे ये एरो बनी ना, ये आगे जाएगी ना, हाँ बस ठीक। Okay. Good afternoon to all. Thank you, Chair, and thank you, Dr. Ved Prakash, for the kind invite, because it is an important event in the sense that sepsis is challenging almost everybody in day-to-day care practice, and no hospital, no nursing home, no clinic, no ICUs, no OTs, no wards, no OPD is going to be spared because of this sepsis. And therefore, this sepsis update on 13th of September is so crucial, a day in the entire year, if I say, that at least one day we can talk about an important area of care that hits everybody. So this small presentation, I wouldn't say it is long, it is just 20 slides, and I'll go through some of the important areas. I'll try and introduce the topic which you all are aware. I'll talk about the burden, I'll talk about the challenge, I'll talk about something about the biomarkers, and then conclude the entire presentation. So to introduce this topic, we know that it is the leading cause of death worldwide, and no matter how advanced we are in terms of the sepsis care bundles, in terms of life support care, yet the mortality stands at 50%. So no matter how advanced we are still there at 50%. If you talk about sepsis mortality, it will, in India, it will vary anywhere between 10% to as high as 80%. And if I talk of septic shock within this entire sepsis, the mortality in India is 40% to as high as 80%. So you can have so many patients of sepsis, but when you think of septic shock, the mortality is 40% to 80%. So this is huge in terms कि हम कितना भी कोशिश कर लें, लेकिन मोर्टेलिटी को चेंज नहीं कर पा रहे। अगर पूरी दुनिया में देखें तो ऐसे लें कि हिंदुस्तान की 30% मृत्यु केवल इनके कारण हो रही। So at least 30% of the entire mortality in India is contributed by sepsis alone. तो ये जब हिट करता है आपके दिमाग में कि 30% मृत्यु केवल सेप्सिस से हो रही है और पूरे विश्व की 20% मृत्यु केवल सेप्सिस पे हो रही है, और उस विश्व में 80% मोर्टेलिटी लो इनकम कंट्रीज़ और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में हो रही है, जिसमें इंडिया भी आता है। तो अपने आप में सोचिए अगर ये मोर्टेलिटी कितनी ज़्यादा है, ठीक है, और 2 में से हर 5 केस जो विश्व में मर रहा है वो अंडर 5 वाला मर रहा है। जैसे डॉक्टर सोनिया बता रही थी कि पीडियाट्रिक का हर दूसरा केस जो मर रहा है वो सेप्सिस के कारण मर रहा है। तो अपने आप में ये भयावह स्थिति को डिपिक्ट करने के लिए है। एंड द राइज इन द बर्डन इज़ प्रॉब्ली बिकॉज हम एज ज़्यादा कर रहे हैं, हम ज़्यादा अस्पतालों में जा रहे हैं, हम ज़्यादा अस्पतालों में इंटरवेंशन हो रहा है, हमें कीमोथेरेपी और ट्रांसप्लांट वाली सर्जरीज़ की तरफ जा रहे हैं, इसलिए ये सारे केसेस का बर्डन विद टाइम इज़ इंक्रीजिंग। ओके, सो हम ज़्यादा सेंट्रल लाइन डाल रहे हैं, हम ज़्यादा डायलिसिस करा रहे हैं, हम ज़्यादा बूढ़े हो रहे हैं, हम ज़्यादा दवाई खाने की वजह से हमारी मृत्यु दर बढ़ रही है, मतलब कि हम लाइफ हमारी बढ़ रही है। इसलिए ये सेप्सिस का बर्डन भी हमारे अस्पतालों में, हमारे समाज में ये बढ़ रहा है। चैलेंज जैसे पहले थे वैसे ही हैं, कुछ और ऐड हो गए। पहले भी एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस था, आज भी वही है। बाकी चैलेंज अभी हमने आपको दर्शाया कि बर्डन क्यों बढ़ रहा है, इसलिए ये चैलेंज बढ़ रहे हैं, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है कि हमें ट्रीटमेंट नहीं मालूम, हमें सपोर्ट मालूम है कि भाई फ्लूइड देना है, एंटीबायोटिक देना है, इंटरवेंशन करना है, लेकिन हमें ट्रीटमेंट सेप्सिस का नहीं मालूम। 30 साल की रिसर्च, हमें ट्रीटमेंट नहीं मालूम। सेप्सिस को ट्रीट कैसे करना है, सेप्सिस को सपोर्ट करना तो सबको आता है,
कि कितना फ्लूइड देना है, कितनी देर में देना है, कितनी तेज़ी से देना है, एंटीबायोटिक बदल देना है, एंटी फंगल ऐड कर देना है, ये सब केवल सपोर्ट है, ये ट्रीटमेंट नहीं है सेप्सिस का। हम केवल सपोर्ट कर रहे हैं सेप्सिस को, ट्रीट नहीं कर रहे हैं सेप्सिस को, इसलिए मुसीबत अभी भी है। ठीक है, तो जितना भी ट्रांसलेशनल रिसर्च हुआ सेप्सिस में, वो मेटेरियलाइज नहीं किया बेड साइड तक, यानी बेंच से बेड साइड पे वो एलिमेंट केयर का आज तक नहीं आ पाया, इसलिए मोर्टेलिटी के इंडिकेशंस जितने भी हैं आज भी ख़राब हैं। मैं बोलूँगा कि हम इसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं। केवल डेफिनेशन की बात करें तो पहले भी सस्पेक्स का सस्पिशन होता था, आज भी सस्पेक्ट कर रहे हैं सेप्सिस, कंफर्म नहीं कर रहे हैं सेप्सिस। पहले भी सस्पेक्ट कर रहे थे, आज भी सस्पेक्ट कर रहे हैं। 2016 के पहले हम जितनी बात करते थे सेप्सिस पे, आज भी हम उतनी ही बात कर रहे हैं, लेकिन सस्पिशन को हटा नहीं पाए कि सस्पेक्ट कर रहे हैं हम सेप्सिस को। ठीक है, सोफा स्कोर सब लोग यूज़ कर रहे हैं आईसीयू के बारे में, कि जब भी ऑर्गन फेलियर या ऑर्गन डिस्फंक्शन होगा, सोफ़ा के बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन सोफ़ा अपने आप में एक लेट फिनोमेना है, अर्ली फिनोमेना नहीं है। यानी अंगों में गिरावट आएगी, सेप्सिस उससे पहले चढ़ चुका है। यानी जितना भी ऑर्गन डिस्फंक्शन या ऑर्गन फेलियर आप देख रहे हैं, ये एक लेट फिनोमेना है, अर्ली फिनोमेना नहीं है सेप्सिस का। हम अपना ट्रीटमेंट या सपोर्ट यहाँ शुरू कर रहे हैं, हमें इससे पहले पहुँचना है सेप्सिस को अगर टैकल करना है। यानी ऑर्गन का डिस्फंक्शन आने से पहले, सेप्सिस शरीर में आने से पहले उसका रिकग्निशन या कोई इंडिकेशन चाहिए हमको। ठीक है, इसलिए दैट इज़ वाई वी आर डिलेइंग इन टर्म्स ऑफ दीज थिंग्स। कल्चर्स का वेट कर रहे हैं, कल्चर्स आएगा तो मैं ट्रीटमेंट चेंज करूँगा, कल्चर्स आएगा तब मैं इसमें एंटीफंगल जोड़ूंगा, कल्चर्स आएगा तब मैं कुछ चेंज करूंगा। अभी तो ट्रीटमेंट सही है मेरा, मैंने तो कमाल कर दिया, ट्रीटमेंट चेंज कर दिया, एंटीबायोटिक लिख दिया, वर्ल्ड का बेस्ट एंटीबायोटिक पीके/पीडी के हिसाब से लिख दिया, और मैंने तो कमाल कर दिया जी सेप्सिस में, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। और कल्चर का इंतज़ार करूंगा, कल्चर आने में लगेगा 60 घंटा सेंसिटिविटी के साथ में, 60 घंटा। सेप्सिस का ट्रीटमेंट देना है 1 घंटे में। आप 1 घंटे के ट्रीटमेंट को 60 घंटे के ट्रीटमेंट या एवेन्यूज से कैसे मैच करेंगे? आप मैच ही नहीं कर पाएंगे सेप्सिस का मैनेजमेंट को। आपको इसलिए मॉडर्नाइजेशन चाहिए अपने पूरे कल्चर स्पेक्ट्रम्स में, जो कि समय घटाएगा फिर भी 24 घंटा। यानी 60 घंटे से 24 घंटे आने में आपको वो सब करना है 2ABCD। ठीक है, जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तब भी आप 23 घंटा लेट हैं सेप्सिस के मैनेजमेंट में। आप समझ गए मैं जो कहना चाह रहा हूँ, कि कल्चर्स आपके ट्रीटमेंट को डिले कर रहे हैं। चाहिए, इंपॉर्टेंट है। कल्चर पॉजिटिव सेप्सिस होता है, कल्चर नेगेटिव सेप्सिस होता है। कल्चर नेगेटिव सेप्सिस कल्चर पॉजिटिव सेप्सिस से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि सब पेशेंट एंटीबायोटिक खा के आ रहे हैं। समाज में एंटीबायोटिक पैरास्टमॉल की तरह यूज़ हो रही है, सब कोई वही खा रहा है। कल्चर में कुछ आता ही नहीं है, कल्चर टेक्निक सही नहीं है, सैंपल साइज सही नहीं है, प्रोसेसिंग सही नहीं है, टेक्नोलॉजी जो चाहिए बेड पे या वार्ड में या आईसीयूज़ में या वहाँ पे, वो है ही नहीं उन कल्चर्स को राइट टाइम पे इवैल्यूएट करने के लिए। तो ये सब मॉडर्नाइजेशंस हैं जिनके बिना आपका सेप्सिस मैनेजमेंट सब डिले हो रहा है। तो पहला काम है इसको पहचानना। अर्ली रिकॉग्निशन ऑफ सेप्सिस सबसे इम्पॉर्टेंट काम है मैनेजमेंट के लिए। कैसे करेंगे? एजुकेट करेंगे, सेंसिटाइज करेंगे, सेप्सिस अपडेट जैसे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करेंगे। ये एक पार्ट है इस पूरे सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम का। लेकिन इसके बियॉन्ड भी कुछ है करने के लिए। जो ज़रूरत है कि कुछ बायोमार्कर्स बॉडी में पैदा होते हैं, जब सेप्सिस अंदर आएगा तो मीडिएटर्स रिलीज़ होंगे, आपको उनको पिकअप करना है। तो ये हेल्प कर सकते हैं आपको अर्ली डायग्नोसिस में। बहुत सारे हैं लेकिन मैं सब जगह पे नहीं जाऊंगा, मैं कुछ ही चीज़ों को पॉइंट कर रहा हूँ।
आप नीचे ये कर्सर चलता है, ओके आप ये 3 चीज़ देखिए कि सेप्सिस के जो बायोमार्कर्स हैं या तो प्रोग्नोसिस में हेल्प कर रहे हैं, यानी कौन मरेगा कौन जिंदा रहेगा बताने में, या डायग्नोज करने में हेल्प कर रहे हैं, या ट्रीटमेंट जो आप कर रहे हैं वो बेटर है, सही है, ख़राब है, चेंज करना है, इन चीज़ों में हेल्प करता है। तो सेप्सिस के बायोमार्कर्स 3 ही कैटेगरीज में जाते हैं, डायग्नोस्टिक, प्रोग्नोस्टिक एंड थेरोनोस्टिक, ठीक है, केवल इन्हीं तीनों पे हैं। बहुत सारे हैं, इतने सारे कि अभी मैं बोल रहा हूँ तो इससे भी ज़्यादा और आ जाएंगे। अभी तक जो आ गए ये 250 आ गए, ये देखिए 250 आ गए। कौन सा यूज़ करेंगे, कौन हेल्प करेगा, पैनल यूज़ करें, बायोमार्कर का पूरा पैनल बना लेते हैं, यूज़ कर दें, इतने सारे आ गए। परफेक्ट अभी तक नहीं आया। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कभी भी बायोमार्कर्स यूज़ करेंगे तो आना चाहिए आंसर, वो ये है, ये आंसर्स मिलने चाहिए कि व्हाट इज़ द लाइक्लीहुड ऑफ इन्फेक्शन अगर ये पेशेंट में है तो, व्हाट इज़ द सिवियरिटी ऑफ इलनेस, क्या ये बायोमार्कर ये बता पाएगा, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली पैथोजन बता पाएगा, क्या ये बताएगा, फंगस में कितना, वायरस में कितना, बैक्टीरिया में क्या ये बता पाएगा, बैक्टीरिया में भी ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव को क्या ये बायोमार्कर बता पाएगा, व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, क्या बायोमार्कर डिसाइड कर पाएगा, इज़ द पेशेंट इम्प्रूव, सुधर रहा है, खराब हो रहा है, चेंज करना है, क्या ये बता पाएगा, व्हेन कैन एन एंटीमाइक्रोबियल बी स्टॉप्ड, कब मैं ट्रीटमेंट स्टॉप कर दूं, इस बायोमार्कर के बेस के लेवल के ऊपर ये बता पाएगा। अब इन सारे क्वेश्चंस में से केवल छठा क्वेश्चन का कुछ आंसर आया है कि हाँ ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करने को तो हेल्प नहीं कर पाएगा, लेकिन ट्रीटमेंट कब बंद करना है ये बता पाएगा एक बायोमार्कर का लेवल आपको, ठीक है। तो ये वर्ल्ड ऐसे जा रहा है बायोमार्कर्स के अंदर। अब इसमें कितने सारे हैं मैं गिना भी नहीं पाऊँगा, ये हर एक जगह का एलिमेंट है, सिस्टम जो ख़राब हो रहा है उससे रिलेटेड बायोमार्कर्स हैं। जब ये गाड़ी ख़त्म हो जाए तो इसके बाद ये ऑर्गन स्पेसिफिक बायोमार्कर्स की गाड़ी शुरू हो जाती है। तो ये इतने सारे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 250 से ज़्यादा हैं। मैं केवल मोस्ट स्टडीड के बारे में बोलूँगा, जो सबसे ज़्यादा स्टडी हुई है वो इन्हीं के ऊपर हुई है। आप जितना भी बायोमार्कर का लिटरेचर उठा लीजिए, केवल यही सब घूम फिर के सबसे ज़्यादा ये आते हैं। उसमें भी मैं सबसे ज़्यादा हाईलाइट अगर किसी को कर रहा हूँ आज के दिन में, वो CD64 है। इसका एरिया अंडर द कर्व देखिए 0.96 है, ये सबको पीछे छोड़ रहा है। CD64, ठीक है। ये PCT जो सबसे पॉपुलर है उसको भी बहुत पीछे छोड़ देगा, कॉस्ट में भी, डायग्नोसिस में भी, ये सबको पीछे छोड़ रहा है, स्टडीज़ में भी, ओके। मैं और मोस्ट स्टडीड में आप देखेंगे एरियाज ऑफ स्टडीज़ जो हैं, बच्चों में कर रहे हैं स्टडी, एडल्ट्स में कर रहे हैं, एडल्ट ICUs में कर रहे हैं और इमरजेंसीज़ में कर रहे हैं। ये सारे जो मैंने अभी मार्कर्स बताए उन्हीं के बारे में है। ज़्यादातर स्टडीज़ कहाँ से हो रही हैं, कुछ में मेटा एनालिसिस, जब बल्क हो जाता है तो उसका निचोड़ निकलता है फिर कि ये स्टडी कौन सी डायरेक्शन में जा रही है उसको बताने के लिए। मैं दो आपके इम्पॉर्टेंट वाली जो आजकल हम यूज़ करते हैं वो CRP, कोविड में हमने खूब यूज़ किया होगा, बच्चों में हमने खूब यूज़ किया, प्रोकैल्सिटोनिन जो लेफ़्ट एंड राइट हमारे ICUs में यूज़ होता है। मैं केवल इन दोनों को आपके लिए बस समकक्ष रख के देख रहा हूँ कि इनको क्या करना है, कहाँ करना है। तो ये जो है C रिएक्टिव, ये आप देखिए जो रेड वाला है, ये कन्फाउंडर्स देखिए, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा नॉलेज बेस है कि CRP भी यूज़ करना है, PCT भी यूज़ करना है। रेजिडेंट को पता ही नहीं है कि कौन सा किस में यूज़ करना है, कब मेरे फ़ायदा होगा। तो आप इसके कन्फाउंडर्स देखिए, CRP का स्टीरॉइड्स, इम्यूनोसप्रेशन, न्यूट्रोपीनिया, रीनल फेलियर में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। तो यानी अगर केस आपका स्टीरॉइड्स पे है, इम्यूनोसप्रेसिव्स पे है, न्यूट्रोपेनिक है, रीनल फेलियर है, पोस्ट ट्रांसप्लांट है, रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी पे जा रहा है, तो CRP बेटर है यूज़ करने के लिए कंपेयर टू PCT। अगर आज आप केवल यही बात समझ लें, इस ग्रुप में CRP बेटर है यूज़ करने के लिए कंपेयर टू अ प्रोकैल्सिटोनिन, तो मेरा सेशन हेल्पफुल है। प्रोकैल्सिटोनिन जो हम यूज़ करते हैं, आप देखिए कहाँ पे फ़ायदा नहीं करेगा। ये बहुत सारे केसेस में फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स देता है। ये न्यूट्रोपेनिक पेशेंट्स में बढ़ता हुआ दिख रहा होगा आपको, ये आपको रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में ये गिरता हुआ दिख रहा होगा। देखिए जब भी पेशेंट इन्फ्लेम्ड होगा कोई भी बीमारी से, चाहे रीनल फेलियर एक इन्फ्लेम्ड स्टेट होती है, तो एक बेसलाइन प्रोकैल्सिटोनिन वैल्यू उसका वैसे ही बढ़ा रहता है। वो आप नॉर्मल सोचोगे, नॉर्मल नहीं आ रहा, ये तो इन्फेक्शन है ना,
उस पेशेंट में वो बेसलाइन प्रोकैल्सिटोनिन बढ़ा होता है, वो इन्फेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता रीनल फेलियर के अंदर एक कट ऑफ के लिए, वो कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर होता है नॉर्मल से। तो ये आपको जब तक नहीं पता है कि रीनल फेलियर में मेरे लिए कट ऑफ 0.05 नहीं है, मेरे लिए कट ऑफ 0.5 है या 0.35 है या 0.25 है, आप सोचोगे हर चीज़ इन्फेक्शन है रीनल फेलियर में, आप दबा के उसको अननेसेसरी एंटीबायोटिक दे दोगे। तो ये बेसलाइन समझना ज़रूरी है कि मेरे पेशेंट में बेसलाइन पीसीटी वैल्यू कितना होता है। तो जब तक आप उसको पढ़ेंगे नहीं, आप जानेंगे नहीं, और सब केसेस में आप पीसीटी यूज़ कर डालेंगे। आप ये भी देखिए कि लिवर वाले पेशेंट्स में, देखिए ये पेशेंट्स बहुत बल्क में अब आ रहे हैं आपके हॉस्पिटल्स में, चक्कर काटते रहते हैं। एक्यूट लिवर फेलियर में देखिए सीआरपी बढ़ता ही नहीं है, आपने सीआरपी यूज़ कर डाला एज अ मार्कर ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। वहाँ पे इसका पीसीटी पे कोई इफेक्ट नहीं आता, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। यानी लिवर फेलियर की वजह से पीसीटी एक्चुअली इन्फेक्शन का पैमाना हो सकता है। तो दैट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग कहाँ यूज़ करना है। इमरजेंसी में आने वाले सेप्सिस मरीजों के बारे में प्रेडिक्ट कर सकता है। दूसरा, इसमें हमने कंपेयर करे 3 बायोमार्कर्स हमने यूज़ करे, प्रोकैल्सिटोनिन यूज़ किया, CD64 यूज़ किया और HNL यूज़ किया। इन ईडी ये प्रोस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशनल स्टडी थी, इसका सैम्पल साइज 200 है। मैं केवल एक इंटरम एनालिसिस आपको दे रहा हूँ। 18 साल से ऊपर के मरीजों को इसमें यूज़ किया गया, अबव 18 पेशेंट्स, और जो ईडी में भर्ती हुए 6 घंटे भी मिनिमम एडमिट हुए, उन सबके से ये सैम्पलिंग की गई। उसमें आगे जाके क्या निकला वो मैं आपको बताता हूँ। ये था मॉलिक्यूल जो हम यूज़ कर रहे थे, इसको क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 64 बोलते हैं, CD64। प्लीज़ नोट कर लें, ये रिप्लेस कर देगा पीसीटी को आने वाले दिनों में। ये CD64 रिप्लेस कर देगा पीसीटी को, क्योंकि ये सस्ता है। सस्ता है पहली बात, क्योंकि इंडिया में हम जो चाहते हैं ना गाड़ी खरीदते हो माइलेज कैसी है, तो हर चीज़ सस्ती वाली हम हमेशा समझते हैं अच्छी है, तो ये सस्ता है कंपेयर टू पीसीटी, इसलिए ये रिप्लेस करेगा। हमने जो स्टडी करी, क्या ये प्रेडिक्ट करेगा कि नहीं करेगा मोर्टेलिटी, ये सेप्सिस को प्रेडिक्ट करेगा कि नहीं करेगा पेशेंट को। तो ये हमने देखा कि देखिए इसका एरिया अंडर द कर्व अगर आप देखें ये 0.986 है, ये बहुत ही ज़्यादा है ये कंपेयर टू, ये देखिए ये जो ब्लू वाला कर्व है ये सबसे ऊपर जा रहा है CD64, ये बहुत हाई है और ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है कंपेयर टू पीसीटी, उनमें पीसीटी भी किया गया था। तो अब हम अपना पॉलिसी अपना चेंज कर रहे हैं कि हम CD64 की रेलेवेंस अब पीजीआई में ये साइट्स पे दिखता भी है और हम इसको यूज़ करने के लिए उसमें हैं। तो वी आर ट्राइंग टू यूज़ दिस एज अ मार्कर रादर देन पीसीटी, क्योंकि पीसीटी बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, आप ये देखिए एविडेंस है, ये केवल इंटरम एनालिसिस में बता रहा हूँ, अभी 200 पेशेंट का सैंपल नहीं आया, केवल 45 पेशेंट के सैंपल में ही दिख रहा है कि इतना हाई है ये इसकी वैल्यू। तो सेप्सिस किस में है ये प्रेडिक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है एटलीस्ट। दूसरा हमने देखा क्या ये मरने की प्रवृत्ति बताता है, जिस पेशेंट में जो है क्या ये मरने की प्रवृत्ति बताएंगे, क्या हु इज़ गोइंग टू डाई। सबसे पहला क्वेश्चन पेशेंट के अटेंडेंट पूछते हैं, सर आप कर तो रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो, ये बचेगा भी? तो आप कैसे आंसर दोगे, पैसा इतना मेरी जेब से जा रहा है सर, मैं 15,000 20,000 50,000 1 लाख रुपया रोज खत्म कर रहा हूँ, क्या ये बचेगा? आप कैसे बताओगे? सोफा स्कोर गिनोगे, मैं कह रहा हूँ वो लेट है, आप कैसे बताओगे? तो ये मार्कर्स जितने भी हैं ये सेप्सिस को बताने में तो हेल्प कर रहे हैं, लेकिन ये मॉर्टेलिटी प्रेडिक्शन नहीं करेंगे। आप अभी फ़िलहाल के लिए इनको मृत्यु किसकी होगी ये नहीं बताएंगे ये मार्कर्स, एटलीस्ट ये एनालिसिस से ये पता लगता है। ठीक है, हमने फिर देखा कि सर्वाइवर और नॉन सर्वाइवर में क्या ये डिफरेंशिएट करते हैं, क्या ये सर्वाइवर नॉन सर्वाइवर के ट्रेंड्स को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है CD64। तो अगर आप देखेंगे नॉन सर्वाइवर वाले पेशेंट्स का ये जो फॉल है, देखिए इसमें फॉल हो रहा है ना सब में, ये एरो देखेंगे तो गिर रही है ना, सर्वाइवर में देखिए ज़्यादा गिर रही है, इट इज़ फॉलिंग मोर, लेकिन नॉन सर्वाइवर में देखिए ये कम गिर रहा है। इसका मतलब जिसका गिरेगा नहीं ट्रीटमेंट के साथ में वो मरेगा पेशेंट। और पहले दिन और तीसरे दिन का सैंपल एनालिसिस है ये, फर्स्ट डे एंड 3, यानी 72 घंटे में अगर CD64 लेवल मेरे ट्रीटमेंट के बाद में गिरेगा नहीं तो ये पेशेंट मरने की प्रवृत्ति रखता है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसी हिसाब से काउंसलिंग करिएगा, इसी हिसाब से अपना ट्रीटमेंट को चेंज करने का पैटर्न करिएगा। मैंने पीसीटी भी करके देखा, मैंने कहा पीसीटी बता पाता है क्या, कुछ बता पाता है? पीसीटी ये बताता है कि अगर किसी पेशेंट का नॉर्मल ये होता है कि हम पीसीटी को ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए यूज़ नहीं करते आजकल,
एंटीबायोटिक कब बंद करना है इसलिए यूज़ करते हैं। तो अगर पीसीटी का वैल्यू आपका 10% पर डे गिर नहीं रहा तो यानी वो पेशेंट आपके ट्रीटमेंट के लिए रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। 10% पर डे फॉल होता है और 80% जब फॉल हो जाता है तो ट्रीटमेंट को बंद कर दिया जाता है। ट्रीटमेंट माने एंटी माइक्रोबियल को बंद करना होता है। 80% फ्रॉम द डे ऑफ स्टार्टमेंट। बस सर फिनिश, आई एम जस्ट अबाउट टू फिनिश इट। अभी हमने बताया कि ये समय का सब खेल है, कितनी जल्दी कौन देगा। अभी हमने बताया कल्चर मेरे को 60 घंटा वेट करा रहे हैं, तो क्या मेरे को पीसीटी भी वेट करा रहा है? क्या मेरे को ये टेस्ट, हाँ ये वेट करा रहे हैं। ये आने में मुझे 8 घंटे से लेकर 12 घंटे तक वेट करना पड़ रहा है कि मेरा बायोमार्कर का लेवल आए। तो लोगों ने इसमें भी काफ़ी काम किया। इन्होंने भी अब पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट को लाने की शुरुआत कर दी और ये पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट है माइक्रोफ्लूइडिक पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग, ऑप्टिकल सेंसर्स एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर्स। अब ये आएंगे बेड साइड पीसीटी एनालिसिस, सीआरपी, IL-6 एंड इवन CD64। ये आपके बेड साइड पे आने वाले हैं, यानी जो रेजिडेंट अंदर है वो सैंपल लेगा, किट पे डालेगा और तट से वैल्यू आएगा। जब तक ये वैल्यूज़ यहाँ तक नहीं जाएंगी, स्पीड यहाँ तक नहीं जाएगी, आप सेप्सिस को जिसको आप 1 घंटे में ट्रीट करना चाहते हो कैसे करोगे? तो ये एडवांसमेंट यहाँ जा रहे हैं। ओके, इसलिए ये अपडेट है। तो मैं सम अप करूँगा लास्ट स्लाइड में। अर्ली रिकग्निशन सबसे ज़रूरी है। बायोमार्कर्स अर्ली डायग्नोसिस में हेल्प कर सकते हैं। प्रोग्नोसिस अभी क्वेश्चनेबल है। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की तरफ सब कुछ जा रहा है। एवरीथिंग इज गोइंग टुवर्ड्स पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, यानी मुझे सेप्सिस हो तो अलग तरीके से ट्रीटमेंट हो और आपको सेप्सिस होगा तो अलग तरीके से ट्रीटमेंट होगा। आपकी डोजिंग अलग होगी, मेरी डोजिंग अलग होगी। तो दिस इज कॉल्ड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। ओके, एवरीथिंग इज गोइंग देयर। कोई भी आइडियल बायोमार्कर अभी तक है नहीं। बायोमार्कर के पैनल भी आ गए, 5-6 बायोमार्कर का पैनल आएगा, वो आप इकट्ठा करिए, तुरंत देखिए लेवल्स क्या है, अपने ट्रीटमेंट को मॉडिफाई करिए। और लास्ट में पॉइंट ऑफ केयर बायोमार्कर सेप्सिस के स्पीड अप करने के लिए, डायग्नोसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए दुनिया सेप्सिस अपडेट कर रहे हैं ना, तो दुनिया आप ऊपर वाले सेक्शन में देख लीजिए कहाँ जा रही है और हम कहाँ पे हैं वो भी समझ लीजिए। ये मल्टी ओमिक डाटा की तरफ जा रही है, बिग डाटा की तरफ जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड डाटास की तरफ जा रही है, डाटा मॉडलिंग, रियल वर्ल्ड सिमुलेशंस की तरफ जा रही है, AI प्रेडिक्शंस की तरफ जा रही है। बायोमार्कर्स इसी के अंदर है। देखिए दुनिया कहाँ जा रही है, मैथमेटिकल प्रेडिक्टिव मॉडलिंग की तरफ जा रही है और प्रिसिशन मेडिसिन, पर्सनलाइज मेडिसिन की तरफ जा रही है। सेप्सिस वहाँ जा रहा है, हम अभी केवल ट्रीटमेंट चेंज कर रहे हैं। तो आप समझिए कि हम कहाँ जाना है और अभी हम कहाँ हैं। तो थैंक यू फॉर डॉक्टर वेद फॉर द इनवाइट। एक मिनट, फ़ोन आ रहा है, एक मिनट। हेलो सर, मैं CME में हूँ, अभी रिंग करता हूँ। ताया, आशा है कि आप लोग इससे लाभ पाएंगे। Can we have some questions, 1 or 2 questions because of time constraints? Switch We can have one of the, especially it was a very nice topic in fact. ठीक है, थैंक यू। कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं भी लंच करूं जल्दी से। ठीक। Just want to know because it's always a pleasure to hear you, sir. Sir, I just want to know, you talked about very much about the CD64. Actually, we are not using it as upfront, in fact, in our setups, and I am really very doubtful whether we are using, whether we have the facilities or not. Ma'am is sitting, I think ma'am may answer that. We're not using upfront. हमारे रूटीन लैब्स में अभी यूज़ नहीं हो रहा। हम प्लान कर रहे हैं कि इसको रूटीन, जैसे PCT हमें अवेलेबल हो जाता है वैसे हम CD64, अभी ये हमारे इम्यूनोलॉजी लैब में होता है, एज अ रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत चल रहा है। तो इसमें कई सारे पब्लिकेशंस PGIs में ऑलरेडी हो चुके हैं। हमारा ये भी पब्लिकेशन होने वाला है CD64 के ऊपर। तो हम बस शेयर कर रहे हैं अपने नॉलेज कि यू कुड गो देयर एंड यूज़ दिस एज अ न्यूअर अपफ्रंट बायोमार्कर फॉर योर केसेस। So just a question that just as you told what are the false negative and false positive tests in the case of CRP and PCT. Yeah. Can we have some data, any information about CD4, where to use, where not to use? For example, यूजली ये बैक्टीरियल सेप्सिस को पॉइंट करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। ये बैक्टीरियल वायरल को डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा, लेकिन कई सारे पेशेंट्स में जैसे कि इम्यून मीडिएटेड कोई चेंजेस हो रहे हैं, आपको पता नहीं लग रहा है ये इन्फेक्शन हो रहा है या ये कुछ और हो रहा है,
तो उसमें ये बैक्टीरियल सेप्सिस की तरफ बहुत स्ट्रांगली पॉइंट करता है। तो जहाँ कन्फ्यूजन होता है हमें, और पीसीटी ज़ीरो होगा, पीसीटी नॉर्मल दिख रहा है लेकिन सस्पेशन फिर भी सेप्सिस हो रहा है, तो ये बहुत हाई होता है उस पेशेंट में। तो हम अपना ट्रीटमेंट चेंजेस कर रहे हैं इसके बेस पे, CD64 के बेस पे। यस, मोर फॉर बैक्टीरियल, मोर फॉर। अभी कोई बायोमार्कर नहीं आया जो बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को डिफ्रेंशिएट करता हो, अभी नहीं आया ऐसा कोई। तो अभी प्रिडोमिनेटली क्योंकि 80% सेप्सिस आपका बैक्टीरियल होता है इंडिया में, एटलीस्ट 14% वायरल होता है, 14% फंगल होता है, और बाकी बचा हुआ सब वायरल है। वायरल के लिए अब ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे क्योंकि लोग टेस्ट ही नहीं करते। तो वायरल सेप्सिस पता नहीं आते जाते रहते हैं हमारे आईसीयूज़ में, वार्ड्स में, हमें पता भी नहीं है क्योंकि हम टेस्ट नहीं करते उनको इतना। तो अभी हम बोलेंगे प्रिडोमिनेटली बैक्टीरियल है, तो वहाँ पे ये हेल्प कर देगा आपको। पीसीटी राइज ही नहीं कर रहा, सेप्सिस है। पीसीटी राइज नहीं कर रहा, सेप्सिस है, मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम CD64 के लिए सैंपल भेज के करते हैं चेक। ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव सेप्सिस में ये ऐसा लिटरेचर जो आप बोल रहे हैं कि कौन सा बैक्टीरिया स्पेसिफिकली ये बढ़ाएगा, ऐसा कोई एविडेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। अभी नहीं है, मैं यही बोलूँगा, अभी इतना एम्फैटिक नहीं है वो डाटा कि हम उसको अपनी डे टू डे प्रैक्टिस की ग्राम पॉजिटिव हो रहा है इसलिए ये वाला होगा, ये अभी नहीं बोल सकते। मैं ये बस ये बोल सकता हूँ पीसीटी राइज है तो बैक्टीरियल हो रहा होगा, बस यही मैं बोल सकता हूँ। और जिसमें सेप्सिस लग रहा है और पीसीटी राइज नहीं कर रहा तो हम समझते हैं कि उसको फंगल सेप्सिस हो रहा होगा। पीसीटी राइज नहीं कर रहा तो हम फंगल सेप्सिस समझने लगते हैं। हाँ, और लेकिन यानी कुछ परसेंटेज ऐसे होंगे जब पीसीटी राइज भी नहीं करेगा लेकिन सेप्सिस है, और अगर CD64 राइज कर रहा है तो मेरा ट्रीटमेंट बैक्टीरियल की तरफ ही ज़्यादा पुश होएगा रादर देन स्टार्टिंग एन एंटी फंगल, क्योंकि एंटी फंगल्स महंगे हैं। एक पेशेंट को 10-15 हज़ार का एक इंजेक्शन लग रहा है, 15 दिन चलना है, कितने हज़ारों रुपये हो गया। तो उसका कॉस्ट बचाने के लिए ये दिस में हेल्प यू, आई कैन से दिस। ओके, थैंक यू। Thank you, sir. That was quite an informative session. Now, I would like to request Professor Rajendra Prasad sir and Professor Ved Prakash sir to come on the stage and felicitate our chairperson and speaker with memento. I would like to request Dr. R.K. Singh sir to come on the stage, please. I would like to request Dr. Rajiv Garg sir to come forward, please. यही तो थे सर, यही तो है सर, राजीव गर्ग सर। अच्छा, सॉरी सर, हाँ, वन अच्छा, NB Singh sir. I would like to request Dr. NB Singh sir to come forward. I would like to request Dr. Ved Prakash sir to facilitate Dr. D.K. Gupta sir. I would like to request Professor Ved Prakash sir to facilitate Dr. Ambuj Gupta sir.
कुछ ना बोलो तो हम खुद ही बोलेंगे। Coming on to the next session, I would like to invite the chairpersons on stage, Dr. Rajkumar Kalyan sir, Professor, Department of Microbiology, KGMU, Dr. Anand Gupta sir, Senior Consultant, Balrampur Hospital, Dr. Rajneesh Srivastav, Senior Consultant, Department of Pulmonary Medicine, Sahara Hospital, Lucknow. So I must thank you, Dr. Ved Prakash. कुछ करेंगे क्या? करिए जल्दी। इससे बोलना, ये पकड़ो भी। सीवी है गाना का, बस इतना सही बस। So now I welcome Dr. Amita Jain ma'am, Professor and Head Department of Microbiology, and she is holding a reputed post Dean Academic nowadays, a good best researchers in the college. So now she will take lectures on the newer diagnostic modalities for syndromic testings. Welcome ma'am, please. So, so I don't think we are not familiar with each other. I know most of you and I'm sure most of you know me. Just one question. How many of the audiences are non-medical doctors? Non-doctors or non-medical people? Yes, ma'am. Raise your Ready. hands, please. Let me start. So I think when all of us are doctors or the medical people here, I should not be much concerned about what I'm going to talk about. I'll be talking about two things here. One is that what is sepsis, very briefly in a very common, almost in layman's terms, and then how we do the syndromic testing. What is syndromic testing and how we do the syndromic testing. When coming to sepsis, very simple definition that it's a life-threatening organ dysfunction caused by dysregulated host response to infection. So there are 3-4 things which is important to note here: life-threatening, organ dysfunction, dysregulated host response, and in response to infection. So there are 4 terms which are to be noted. There have been a lot of awareness about the sepsis management in last 2 decades. And as a result, what we see is that there are so many guidelines which have come for management, and every now and then, every other year, they have been changing. The latest one we got is in 2021. Sepsis is often attributed to bacterial infections. My previous speaker, Dr. R.K. Singh, has very beautifully said that it's not only bacterial, often attributed to bacterial infections, but it can be because of other reasons, and we all have seen lot of septic cases during COVID-19 outbreaks. So it was a pandemic situation, and everybody remembers how our ICUs used to be full because of the sepsis. It's a leading cause of hospitalization and hospital mortality, and since morning I'm sure you are listening that more than one third of the hospital mortalities are due to the sepsis. Not even that, it's just to make you understand how important it is. People who recover from sepsis, even they suffer long-term side effects. So it is not that if I am out of sepsis, I am out of all healthcare needs. It's not like that. How do you diagnose sepsis? I don't have to talk here much. You all have understood that there is no marker clearly saying that this is sepsis or this is not sepsis. There are large number of markers which we talk about. PCT, you have heard its limitations and how it works. You have heard about it. Dr. R.K. Singh has very clearly said that peripheral blood culture takes 5. He was talking about 60 hours and scaring us of 60 hours. It takes long. But still, I tell you, nothing can replace peripheral blood culture. So let's not just push it around under the carpet. CBCs and various chemistries which are available, they all guide us.
it's not that they are not important, but there is no definite marker. And one of this chemistry is serum lactate measurement also, which guides us. So these all are markers which guide us in different situations. They may not be able to diagnose one diagnostic marker. Is it available? No, it's not available. So this is PCT. About PCT, if you start looking at procalcitonin, you start looking in the literature, you get lot of confusing tables. So some of them, this is just an example. People said that people with mild illness, what should be the PCT level? How will we, when will we start antibiotic? When we will de-escalate antibiotics? So these are the various questions which people ask, and PCT does help, though it's not that absolute indicator of anything. So outside ICU, but moderate. In ICU, how to go about it. So there are clear indications. Important thing here is to note that once you know your patient is in sepsis, and you know patient is moderately or severely sick, you do not wait for the culture reports to guide you. You have to start empirical antibiotic treatment. Based on your reports further, you can regulate your therapies. What is syndromic testing? When we use one test to simultaneously detect several targets, we call it syndromic testing. This becomes very important when we are looking for etiology of a condition or a syndrome, where the etiologies are various, more than one etiological agent, but signs and symptoms are not very clearly guiding or suggesting. In these kind of syndromes, syndromic testing helps, because if you apply one test, you will probably get the answer that what is the etiology or which antibiotic to start. Most of the platforms which are being sold in the market is about, say that it's the multiplex molecular assays. These multiplex molecular assays are nothing. There is nothing different. It's just a PCR test which we did for, let's say, everybody is familiar of COVID testing done by PCR, multiplex PCR. That was one multiplex PCR where we were looking at 3 or 4 targets in one go. That is one multiplex PCR assay. If we take it beyond this, suppose we start testing 20 targets or 30 targets in one assay, that becomes syndromic testing. This syndromic testing it was called the game changer. So why? Because within few hours you get to know what is causing the infection. Does it help always? Not really. Unless you know which antibiotic to start, this is not going to change your life to a great extent. But yes, it can help. So the important point here is it can be helpful if you implement it thoughtfully, you interpret the results carefully. कुछ भी result आ गया, कुछ भी किसी को भेज दिया, इससे बात नहीं बनेगी. जो result आता है, you have to look at it carefully, interpret the results carefully, and then you can change the outcome of the patient. Ultimately, what we want to change the outcome of the patient. If my patient is in ICU with sepsis, what I want the patient should come out of ICU and should go back home disease-free, right? This is our aim. So outcome is not going to change unless we interpret our results carefully. When I said interpretation, I would like to mention one thing. We know that if we are targeting, let's say 10 things, okay, in one PCR assay, where we are targeting 10 pathogens, and 2 of them are commensals also. So it's very important to see that what is being picked up. Is it a commensal or a pathogen? If it is commensal, what is the bacterial or viral load here? Because then judging that is it the culprit or just an innocent bystander is very important. So this is where people who are sending out the report, their role is very important. The panels are available for various things. Wherever there is a market, because every physician wants a panel testing, send a sample, get a report, whatever this report is, they don't care.
उसको कितना अप्लाई कर पाएंगे, आई डोंट केयर, but I want some report to guide me. So what they want, they don't want to put their head into it, they just want to send a sample, want a report, take an action. So obviously market is flooded with various panels for several syndromes. The commonly which are available are for bloodstream infections, severe acute respiratory illness, influenza-like illness or upper respiratory tract infections, UTI, meningitis or encephalitis, STI, RTI, etc., etc. So there are panels available for various situations or syndrome. And some of them, the difference basically is of two types. Some of these panels work on open platform. What do we mean by open platform? Where I just buy the reagents, I have a PCR machine, I can use this panel, put it on my PCR machine and get the results. So that's an open platform. But companies don't make very big money if they sell the reagents for open platform. And many people are not interested on working on open platforms because here you need some technical skills. You have to process the sample, put the test, read the test, interpret the test. What is good for both of us? What we want, companies want to sell us closed systems. And we as laboratorians, many of us, we want to use the closed systems. Why? Because my own input is very minimal if I am using a closed system. Hands-on time is less, running time is less, I don't need trained technician, I don't have to apply a lot of my head for interpretation, that all is built into it in the computerized form, and the machine itself gives a report. I'll show you an example. What we do at KGMU is a mixed thing. For most of our situations, we have in-house panels, which are open systems. You send me the sample today, by evening you get the result. See, so these are open system, and many a times your patient have free access to these panels. Sometimes your patient have to pay, but these payments are very minimal. And these are under our control. We as laboratorians, we want to work with that because here we have lot of control. However, some people want it other way. We want lot of control, our control, some people want it other way. This is one example. This is the syndromic respiratory panels which are available for these many pathogens. And see, there are 5, 6, these all are closed systems. None of them are open system. I have not put in open systems here because the organizers wanted to talk about BioFire. BioFire is a new platform which is being available now. This comes from a company known as BioMerio, and their respiratory panel has more than 22 targets here. Okay. So this is one respiratory panel from BioFire. So this is just an example. If you look in the slides, what you will get many of them which are available. Before you evaluate or perform any syndromic testing, what are the factors you should look for? You should look for quality of syndromic panel. I think it's very important not only for the lab people, for the doctors who are prescribing the test, for them also it's very important to understand what are you ordering, what the reports are you going to get, and how you are going to use this report. It's very important. So look for what you are ordering. If you are, very commonly I have seen people say, BioFire करा दीजिए मैडम, हमारे पास नहीं है भाई, क्यों करना है BioFire? मालूम नहीं क्यों करना है, बस करा दीजिए, हमको 6 घंटा में रिपोर्ट आ जाएगी, शाम तक हमें पता हो जाएगा हमें क्या करना है, which is not true. See, for example, I have just taken an example, this Pulmonary is the brand name of BioFire, the machine. They have a meningitis encephalitis panel. On their pamphlet, they say overall sensitivity is 94% and specificity is almost 100%. This is what they say on their panel. But if you look into it, you will see that some of the organisms like Cryptococcus, their sensitivity is merely 52%. आप accept करोगे 52% पे कोई test. It's as good as not applying it. Because 50% chance है, 50% chance नहीं है, तो मत apply करो test. And 80% is specificity. Even if it's saying है, तभी भी 80-20% chances है कि नहीं है. So this is the reality and this is what is projected, because what company is talking about is the real projection. What is the real thing?
What they are getting cumulative. They are not talking about each organism carefully. You also should look at the limit of detection or analytical limits, which determines the lowest pathogen number which is detectable. For example, if you are looking for, it's not related to any panel on biofire, but just an example. Suppose you are looking for MTB, Mycobacterium tuberculosis. Will you not like to detect even a single organism present? You will. But suppose you are talking about strep pneumoniae in throat. Would you like to pick up single number of organism? No, because it's commensal there. It might be sitting there, you may be able to pick up. So you have to know what you are looking for. You also have to understand what are the inter-platform differences. Because many a times we get a complaints, अब उनका report ये आया था, आपका report ये आया था, आपका गलत है. हमारा गलत है दो कारण से. हमने आपसे पैसे नहीं लिए थे. हमने आपसे बहुत देर बात करके आपको समझाने की कोशिश की थी कि हम सही क्यों हैं, इसलिए हमारी रिपोर्ट गलत है. Believe me, it's not the money which determines, or the money you are spending on the test is determining the quality of the test. So look at the result. What is the result? Look at the data. What are you getting out of that report? It's very important. So never mind, हम एक और कारण से भी गलत होते हैं, क्योंकि हमसे आप बार बार रिपीट करा लोगे, 20,000 रुपया बार बार नहीं दे पाओगे. So that is another reason why we are wrong. Turnaround time, test failure rate, and number of targets in the syndromic panel. It may look very nice to look at 41 targets being detected. How many are of significance out of these 41? Number one. Number two, turnaround time. They say 1 hour. Machine ka time biofire ka 1 घंटा है. So do you really get your results? Have you ever got the result in 1 hour? No. I have just checked before I came here. I checked, just was Googling that what is actually the labs charging for this. So one thing which caught my hand, this 20,000 is not a random figure which I have picked up from anywhere. This is what I have seen, that one of the laboratories in Bombay was charging for pneumonia panel 20,000. And actual cost is not 20,000. So why they are, I'm not saying they are wrong. They are very right in charging you 20,000, because if they have to run a good quality lab, charges should be 20,000, because there is test failure also. Many test fails. Who is going to pay twice? Test fail ho gaya. Nobody is going to pay twice. So this is also important. These are the factors. So syndromic testing has, I'm not saying it's a disadvantage, it's very advantageous, but it has both advantages and disadvantages. And before you are ordering a test, please look into the depth of it, what I'm going to get after this. This is very important. Coming to the sepsis, and I have only 3 minutes left, I'll finish very fast. It can be caused by various pathogens, high mortality, we have talked about all that. Now I'll be coming specifically to biofire, which people wanted to understand. I'm skipping all that. This is what the machine looks like, biofire, and it identifies pathogens from positive blood culture in about 1 hour. So nobody is going to give you result within 1 hour. You have to collect a blood culture, send the blood culture. Once the blood culture peeps, it might be few hours, it might be few days also, that broth is tested. Okay, so first is blood culture, then machine time is 1 hour, fine. 9 out of 10 positive blood cultures, it works out. So 10 में एक तो काम नहीं करने वाला है. Okay, so even if your blood culture beeps, in one you are not going to get any result. Though it's simple, there is no almost nil hands-on time. Precise measuring or pipetting is not really required. And you see that they have some genes which are the markers of resistance also, MEC-A, VAN-AB, KPC. So these are the genes are there. Some yeast are there, some gram-negative and some gram-positive bacteria are there. How does it work? It's very simple. It's a multiplex PCR assay. This is not... Anybody can help with this? I cannot see the picture here too. I cannot see it. Okay, thank you.
So see, this is the cartridge. And you see how complicated it looks. It must be several thousand rupees. It has two ports. In one port, red one, your sample goes. In blue one, your buffer and water goes. So you put sample here, you put water and buffer over here, you closed it, put it in the machine and forget it. After 1 hour, come and take out your report. That's how it works. What is the principle here? Principle here is multiplex PCR assay. Okay. So there is no rocket science here. It's an old science. Nothing out here. So this is what it is. Now this is the closed look of cartridge, but it's not very simple, I tell you. PCR may look very simple now, but 5 years ago it was not that simple. And this is around 10 years old technology. This is the cartridge. Here we have put the sample. This is like a bucket where the sample is lysed, DNA comes out. These are the wells where the PCR is happening. This is a major part of PCR, and this is only the part where PCR is happening, and this is the multiplex PCR. So 2 wells, nucleic acid purification. This is the first PCR, and that is the multiplex PCR, where all the 27 or 41 targets are amplifying. So you can imagine the competition in the target and the probes which are available here. From here, this goes into these tiny little wells. Each dot is a well actually, and in every well and PCR, which is a monoplex, singleplex PCR, which is happening here. And if any of them has it's based on one technology, I'm just using because I see some of my residents, that is working on the melt curve analysis, which is a very sensitive technology, and this works on melt curve analysis. So there are no probes also, they are only primers. This melt curve analysis, wherever you get a signal, you can pick it up. Location is fixed over here, okay? So all the reagents are fed in these wells. You only have to put the water here, you have to put the sample here, close this, put the cartridge in the machine, and you are there. This is how you get your report, and the report says, see, detected, not detected, detected, not detected, detected. अब आप जानिए, आपका काम जाने, उन्होंने टिक 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 करके दे दिया, कोई और interpretation analysis नहीं. And this is what you get probably. I don't know, I have never seen a real life report, but this is probably you go. Identification 2 panel has some, I have said somewhere that how many? It has 40 something signals, 41 or some signals, 43 signals, and so this is still more developed. The problem is the more are the number of the signals, less sensitive it becomes, because there is more competition in the PCR material itself. Whatever you are putting, they are the building blocks, and these building blocks are limited in number. Then you have exposed them to lot of type of DNA, RNA, and now you want it to work. It does work because it's very well standardized and characterized. However, there can be problems. So understand the limitation of the test also. So with this, thank you very much. Just few points to ponder. Timely diagnosis can save your patient. Number 1, I cannot provide you. Clinical judgment use kariye, clinical judgment use kariye, clinical judgment use kariye. Syndromic testing may be the game changer if you have a good syndromic test and you know where and why you are applying it. Understand the limitation of each test, which often we do not understand. But हमको किसी ने बता दिया biofire है, order biofire. Think before apply. Traditional versus commercial, because commercial are very expensive tests, and so think about it. Thank you very much. That's all. Any questions? Otherwise, I'll give it to next speaker. Thank you, ma'am. So it is as ma'am said, this is a new technique, but we should not forget which test you have need and what is interpretation of the test. It is very important, not the new technology. Our targets should be the diagnostic. And which test advised by the physicians. So there are many laboratories in the city. So which test you have required. So it is very important, and interpretation of the test is very important. So clinical judgments, clinical history, and laboratory test only for the support you in your favor of the diagnosis. So thank you, ma'am. Thanks again, ma'am. Thank you so much.
Thank you, ma'am, for your wonderful presentation. It has always been a delight to listen to your vast experience. One thing which I want to mention about biopharmaceutical malaria, we have been using since last 2 years. It also does not include Strenotophomonas maltophilia. ये इसकी लिमिटेशन Yes, है ma'am. So, अभी इन्होंने ऐड किया है जो BSID2 पैनल है उसमें इन्होंने 2 ऐड किए हैं एक Strenotophomonas. मॉल्टोफाइला और एक ऑरिस कैंडिडा ऑरिस Yes. 2 इन्होंने ऐड किए और एक और जो हम लोग प्रॉब्लम इसमें मतलब हमेशा देखते हैं कि जब हम बायोफायर करते हैं तो वो 4 ऑर्गेनिज्म दिखाता है बट कल्चर यूजली ग्रोज 1 or 2 सो देयर इज डिस्कॉर्डेंस बिटवीन दीज टू सो इट नीड्स टू बी इंटरप्रेटेड बिकॉज इट्स अ PCR essay it's a very sensitive essay it picks up even if a single bacteria is growing अपने बाहर से ही कुछ चला गया वो भी ग्रो कर लेगा so this is the limited that's where the interpretation comes and most of the time the laboratories do not want to interfere वो उनको दे देती हैं with a disclaimer that this is for the research use only थैंक यू मैम थैंक्स okay thank you Thank you, Amita, and thank you, the chairpersons. And what you said is the points to ponder is very valid. And I hope you remember that from last 35 years, I used to teach this phenomena in undergraduates, postgraduates, and everyone that the tests are you should not be dictated by any test, be it be biofire, maybe anything. You have to take with your all materials available. Especially this is very true for the younger generation. And I say in the last, don't treat the test, treat the patient as a whole. I'm happy that in your points to ponder you said the same thing. Thank you. Thank you, ma'am. That was quite a piece of information. Next, I would like to request Professor Rajendra Prasad, sir, and Professor Ved Prakash, sir, to come on stage and facilitate our chairperson and speaker. I would like to request Dr. Amita Jain, ma'am, to come on the stage, please. I would like to request Dr. Rajkumar Kalyan sir to come on the stage, please. I would like to request Dr. Anand Gupta sir to come on the stage, please. I would like to request Dr. Rajni Srivastava sir to come on the stage, please. कर देंगे मैम आपने अपना वो कर दिया क्या मैम इनका मैम का अगला है वो कर देंगे Moving ahead, I would like to invite the chairpersons for our next session. Dr. K.K. Salvani sir, Professor, Department of Medicine, KGMU. Dr. Ram Narayan Rawat sir, Senior Consultant, Department of Pulmonary Medicine, Balrampur Hospital, Lucknow. Dr. R.K. Dikshit sir, Professor, Department of Pharmacology, KGMU. So, good afternoon. After a very informative talk, now we move on to next talk. And that is to be delivered by Dr. Vimla Venkatesh. She is professor in Department of Microbiology in KGMU, Lucknow. She is also Vice Dean Academics, KGMU, Lucknow. And her area of interest are viral serology and molecular biology. And she has received several extramural grants for research in various infections, malaria, HIV infection, infection prevention and control, and antimicrobial resistance. She has several publications, and she is a member editorial board of various national and international journals. She is also co-author and co-editor of Practical Microbiology for MBBS students, which has been published by Elsevier Publication.
She is going to speak on antibiotic stewardship and guiding sepsis treatment. As we know, a good antibiotic stewardship program is a must because irrational and indiscriminate use of antibiotics actually leads not only to antimicrobial resistance, it also leads to treatment failure, various side effects, and emergence of other infection, like one of them is Clostridium difficile resistant infections. And this effective antibiotic use also reduces the cost and duration of hospital stay. Now I will invite Dr. Vimla Venkatesh to please deliver her talk. Good afternoon. Thank you, Dr. Savlani, for that introduction and the introduction to the talk itself. And I think you have summed up, everything I have to say actually in those few crisp words. Before I start, I have residents in the audience. Are there residents in the audience or everybody is, faculty here? Yeah, wonderful. So I'll need you to do a little interaction for me in between. So I'm going to request you to pay a little attention. Okay, we will be asking a few questions from you. Something that you do in your daily life. Okay, so when I was given this topic 2 days back actually, when I was given this topic 2 days back, I think maybe Dr. Ved Prakash, I don't know why it was late, maybe he just planned it late. So I was a little concerned because antimicrobial stewardship in guiding sepsis treatment seemed to be a little bit of a call for a microbiologist. I'm a microbiologist. But anyway, I said, no, we must do this because we've always wanted to speak on AMSP. The microbiologist has a big voice in AMSP. So when we use the term AMSP or antimicrobial stewardship, what is the one term that springs to your mind? To my mind, the first term that comes into my head is antimicrobial resistance. While I do know that antimicrobial stewardship is a vaster area than just antimicrobial resistance, in large part, today the world is guided by AMR for AMSP. This is the simple thing I can say. So, as the august speakers before me have been saying, what is this? What are the data for antimicrobial resistance? Individual hospitals generate, of course, a large number of data. Every report we give you shows you a lot of resistance organisms. What does this all actually translate to in context of the world we are living in? So this is data from the United Nations Environment Program released on the 7th of February 2023 based on a study they had been conducting over some time. So what they say is that we are likely to have 10 million additional direct deaths due to antimicrobial resistance by 2050, which means your patients, your family are all going to be in some way impacted by AMR. The other even more staggering data is that 24 million people go up to 30 actually here, 30 million people are likely to be pushed into extreme poverty due to AMR, due to antimicrobial resistance. So that seems so difficult to imagine. Right now the figure is 2 million. But this is going to become 20 million. By when? By 2030. So that's just 7 years away. So that is the data that we have right now. And WHO calls it one of the top 10 global threats for health of human beings on this planet. So of course, because it is so big, we know there is a war against it. So there is a war against antimicrobial resistance. And in large measure, this war is trying to use what we call the One Health approach. We recently had the G20 meeting concluded, and if any of you have seen the agenda of the G20 meeting, one of the important points that they brought out was that we will use the One Health approach in the near future
for antimicrobial resistance, to deal with antimicrobial resistance. This figure actually is a screenshot from what is called a principal advice to the government of India, who tracks One Health. So One Health is a really big concept today. But right now, I am not here to talk from the One Health perspective. I am here to talk from the perspective of a clinical microbiologist for antimicrobial stewardship in guiding sepsis treatment. I have some images here. I would really like you to look at those images. Just keep those images in mind. What does that image suggest to you? Anybody would like to say? Anything? Any of the images are familiar to you? And you can just call it out. Yeah, fantastic. That's Ukraine war. That image? Himachal. So this is just to say, just an indicator I want to say, this is a war, number one, not with bullets, but maybe with our antimicrobials. And the second image I wanted to highlight, that AMSP and AMR are all very closely linked with climate and change. Okay, but we are not that big. We are just in this hospital, in this one room, in these buildings. What can we do for this war effort and how? So we are in a hospital, and we know hospitals are big producers of antimicrobial resistance. Why? Because antibiotics are maximally used in hospitals, especially in tertiary care hospitals like us. So how do we, as people in the hospital, work on AMR? Are we or should we not be part of this war effort? So the one thing that we can all do is be part of the antimicrobial stewardship program in every capacity that we are in here. So what I will be talking about very, very briefly each is the antimicrobial stewardship program. Some of you may already be familiar, but I would still like to reintroduce the important concepts of AMS. I would also like to talk very little about sepsis, because everybody has already told you a lot about sepsis, and I am going to try to address this little bit, implementing antimicrobial stewardship for sepsis. So let us see how we can do it. So what is antimicrobial stewardship? It involves the timely and optimal selection, dose and duration of an antimicrobial. So antimicrobial stewardship does not, what does the term stewardship mean in general? I think when we hear the term like stewardship, we feel कि कोई हमको control कर रहा है. But truly, stewardship just means regulating. It does not mean control. So what it is, stewardship is not about stopping use of antibiotics. It is about using antibiotics more smartly and in a better way, so that we have the best clinical outcome, we have minimal toxicity to patients, and we have minimal impact on resistance and other ecological adverse effects, such as the emergence of Clostridioides difficile. So it is not about stopping, but about smarter use. Best clinical outcomes and minimal toxicity and least emergence of antimicrobial resistance. As you can see, antimicrobial stewardship has been defined variously by many, many bodies across the globe. All the important bodies are into this fight. So the use of right microbial, right patient, right time, right dose, route and frequency, causing the least harm to the patient and future patients. Is this as easy as it says? इतना आसान है क्या? इतना आसान है ये? बिल्कुल नहीं है. So what is AMS? AMS is a coherent set of actions. Please remember, this is a coherent set of actions which promote the responsible use of antimicrobial as applied at individual, national, and global levels and across human health, animal health, and the environment. So it is not a one thing. It is not just controlling antibiotics in hospital. It is a much vaster spectrum. However, when we come down to just the hospital, just hospitals can also work at this. So in India, how are we going about the AMS? Right now, we have
an antimicrobial resistance surveillance and research network, a part of which actually also deals with antimicrobial stewardship. Currently, the AMR and the antimicrobial stewardship program is going on in your hospital. How many of you are aware of this? Anybody in the audience is aware that we are running both an AMR and an MSP program? So nice. So I'm very glad that I'm telling you this little bit. We are running an AMR program for ICMR, and we are also running an AMSP program. In the AMSP program, we've been doing it for about 4 years now, I think, 4 or 5 years, 4 years. So in the AMSP program, since I'm speaking primarily for AMSP, what we are doing, what we have already done is, we have looked at our formulary very carefully. We have tried to do some kind of audit for the drugs, the antimicrobials and other drugs that are being used, mainly antimicrobial because this is for AMSP. And also, we have done a bit of formulary restriction that colistin is not easily available from the store without some pre-authorization. Okay, so let's just go back in the story a little. So why do we need AMSP? Because we have AMR. Anybody doubts that we have AMR? Can I hear any doubt here? No, I don't think anybody doubts it. So why do we have AMR? Because antibiotics are widely used, because antibiotics are widely misused, because antibiotics, antimicrobial prescribing facts are so many, so complicated and so difficult to recall. How do bacteria? I'm only talking in context of bacteria because this is a sepsis talk. So how does antimicrobial resistance develop? So how do bacteria become resistant? What happens when millions of bacteria multiply? One out of them becomes naturally resistant. It acquires a mutation gene. When you expose bacteria to antibiotics, the antibiotic will kill all the sensitive organisms. So the remaining will be that resistant organism. That resistant organism under antibiotic pressure will become the predominant flora. How frequently does it happen? How much? We know that exposure to one antibiotic for just a day can lead up to 8% resistance. So it's not a small thing. Just one antibiotic, one day. Okay, so one of the things that WHO has done is created this classification. I think some of you may be aware of this classification. Dr. Dixit talks about it a lot. So, and he teaches our MBBS students. So anybody who is MBBS from here maybe should remember. So WHO has an aware group of classification of antibiotics. So we have defined a group called an access group. We have a watch group and a reserve group. So in the access group, every clinician can access it in the hospital, in the community. In the watch group, used for a limited number of specific infections. सबके लिए नहीं use करिए. That is the whole funda. Reserve group, use only for infections due to multi-drug resistant organism and use it as a last resort options. I am not reading out the antibiotics, but if you have a look, you will feel that we are living among lot of resistant organisms, so we are entirely dependent on the reserve group. This is really not a true story, but still, I understand you may be feeling like this. Okay, so we have the AMS program. After that short diversion to AMR, we have come back to the AMS program. So, what interventions कर सकते हैं और फिर हम कुछ infection and syndrome specific interventions कर सकते हैं. Broad interventions में क्या-क्या होते हैं? एक होता है time out. Time out का बहुत simple मतलब होता है after starting antibiotics 48 hours later review. See if you are giving the, maybe you will have the culture report back by then. Most likely you will. So look at your culture report, look at the drug you're giving, look at the dose, see is it okay, see if you need to de-escalate and see how much duration depending on the infection that you have now diagnosed in the 48 hours. पहले तो आपने diagnosis पे नहीं पहुंचा था. Presumptive, you were on presumptive diagnosis. Now you have diagnosed. So you can decide on the duration. That is the 4D. Then we look at prior authorization. Prior authorization means some antibiotics will be restricted. It means JR2 नहीं prescribe करेगा, वो consultant को पूछ के ही
प्रिस्क्राइब करेगा, डिस्कस्ड विद द एक्सपर्ट। थर्ड मेथड होता है प्रोस्पेक्टिव ऑडिट एंड फीडबैक। इसके मतलब आपके डिपार्टमेंट से बाहर आके कोई चेक करेगा और ऑडिट करेगा, जो हम जैसे कर रहे हैं, कि क्या सही एंटीबायोटिक यूज़ हो रहा था कि नहीं यूज़ हो रहा था। अ सेकेंड वे वी लुक एट इट इज़ व्हाट वी कॉल फार्मेसी ड्रिवन। फार्मेसी ड्रिवन के मतलब होता है कि द फार्माकोलॉजिस्ट और द फार्मासिस्ट puts automatic audits on your antibiotic prescription. In India, we don't use this much, but some of the bigger corporates have started doing, because prescribers may not have all the correct information, but the pharmacist is better at understanding PK/PD, area under curve, कौन सा drug कैसे use करना चाहिए renal clearance के साथ। तो ये चीज़ें, if some of you can come up with an example, though I'm running short of time, if somebody can come up with an example here, I would really love it. What can you do for dose optimization? I know the residents here must be working on this. You calculate renal clearance? Yes, that's how we do it. Then we also look at automatic time sensitive stops. आप भूल गए दवा बंद करना, पर सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस के लिए दिया जा रहा है, तो सिस्टर अपने आप रोक देगी. That is one method of doing pharmacy driven. Then we come to today's actual talk, infection and syndrome specific interventions. So what are they? We know these interventions are very, very common for community acquired pneumonia, for urinary tract infection, for SSTIs. But are they valid for sepsis? सेप्सिस में तो 50% मोर्टेलिटी होता है भैया, सेप्सिस में हम कैसे MSP करेंगे, कैसे दवा तो चलाना ही है, कितना एंटीबायोटिक चलाना चाहिए सेप्सिस के लिए भाई, इतना हाई मोर्टेलिटी, 50% लोग तो वैसे ही मर जाते हैं, कितना दवा चलना चाहिए, 1 2 3 4 5 कितने? So when we start with empirical, we know we are using, overusing. कल तक नहीं improve हुआ, दवा बदल दो, परसों नया दवा डालो. But still, let us take a little step back and think we can do stewardship in sepsis and suspected sepsis. What can we do? One common thing we can do is de-escalation, especially when we are using lots of antibiotics. So we have one antibiotic which is the pivot, the central antibiotic, core, जो आपने सोचा है. उस कोर के साथ आपने खूब सारे और दवा घुसाया है, आपने एंटीफंगल भी डाला है, MRSA के लिए भी ट्रीट कर रहे हो, डिफिकल्ट वो भी हो सकता है, लीजनला भी हो सकता है, डाल दो कुछ लीजनला के लिए, क्यों नहीं टाइफाइड वो भी डाल दो भाई, सब डाल दो, डालते तो जा रहे हो. तो थोड़े दे, दिस इज नॉट माई, आई हैव जस्ट टेकन इट फ्रॉम, प्लीज ऑल्सो आई अपोलोजाइज, आई हैव नॉट रियली रेफरेंस्ड इट हियर, बट इट्स फ्रॉम वन आर्टिकल. सो प्लीज लुक after 48 hours, once you have some culture reports back, try to look to see, can you stop something? Do we have to keep giving random antibiotics? So I would like to come to my little bit. As a laboratory person, how can I help you? For AMSP, for antimicrobial stewardship. So I will say use the microbiology laboratory. First request, use it. Do cultures. Which culture? Blood culture तो generously करिए. Do lots of blood culture. Use AST reports. We are very careful with AST reports. Use them to guide your antimicrobial therapy. Use antimicrograms. What is the difference between AST and antibiogram? I hope you all know. AST is for one organism, and antibiogram is a cumulative report for the 20 or 30 organisms of the same species that came from your ward or your hospital. My request here is use the blood culture generously, but when you are using the blood culture, please do appropriate collection. Appropriate collection means सही time, सही तरीके से. एंटीबायोग्राम बनाते वक्त ना मुझे ऑर्गेनिज्म चाहिए होता है. यहाँ पर हमारे कल्चर रिपोर्ट्स आप देखोगे तो आपके पास तो आती है रिपोर्ट. हम लैब में जब एनालाइज करते हैं, अगर 100 कल्चर आते हैं, एक तो हमारे 50 बॉटल बीप करते हैं, विच इज़ अ वेरी हाई नंबर. ओनली अबाउट 10 to 20 शुड बीप. जो ये 50 बीप कर रहे हैं, उसको जब हम मेहनत करके सब कल्चर करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्या निकलता है? उसमें 50% कंटैमिनेंट या कॉन्स होता है, कोआगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई.
कोआगुलेज नेगेटिव स्टेफिलोकोकाई कहाँ होता है? स्किन पर होता है। भाई स्किन का कल्चर कर रहे हो कि ब्लड का? तो ये तो आपको सोचना पड़ेगा। तो ना हम अच्छा एंटीबायोग्राम दे पाएंगे, ना ही अच्छा एएसटी दे पाएंगे, क्योंकि वो कॉन्स जो है, जो हिमोफिलस बैठा है, स्ट्रेप्टोनिमोनी बैठा है, उसको ओवरग्रो कर जाएगा बहुत इजीली। सो appropriate collection, especially using sterile processes. Second thing, multiple sets. ज़्यादा बॉटल भेजेंगे तो बेटर रिपोर्ट आएगा, 2 साइट से भेजेंगे तो बेटर रिपोर्ट आएगा, क्योंकि अगर एक में कॉन्स ग्रो कर रहा है तो दूसरे में हो सकता है आपका रियल पैथोजन ग्रो कर जाए. सो सेंडिंग मल्टीपल सेट्स. Appropriate labeling. If I don't know where the set has come from, how do I know what to report? Label the bottle. What is the site? Is it peripheral? Is it central? Is it right hand? Is it left hand? Where did you collect from? Send the bottle to the on time, because if it is not incubated immediately, we will never be able to give you time to positivity. Madam talked about using biofire. हमारा बॉटल बीप करता है, हमने बायोफायर लगाया तो हमको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, आपका पैसा वेस्ट होगा. So we have to be really careful about sample collection. This is what I really want to say today, because to help you with AMS, you have to help me with good quality blood cultures. Understanding what antibiograms are. Every year we give you antibiograms. We publish them and send them to you in the form of a newsletter. Understanding how these antibiograms are created and what they should mean to you. How do you use an antibiogram? You use it by seeing what is the cumulative resistance in your organisms. So choose the best antibiotics from there to make your antibiotic policy for your ward, your unit. That is how you should be using the antibiogram. And if you do this, you're automatically participating in the antimicrobial stewardship program, because you're beginning to use the right empirical therapy. And if you use good quality, give us good quality culture and use the culture report, you can automatically do de-escalation. So these are the primarily two ways by which we can help you in this war. And you can help us fight this war. So in the hospital, from a perspective of a clinical microbiologist, this is how we can use stewardship to guide sepsis treatment. So this is a saying by Walt Disney. I want to end here with this. The way to get started is to quit talking and start doing. So let's all start practicing antimicrobial stewardship and also taking better blood cultures. Thank you all for your attention. Thank you, Madam, for your informative talk and summarizing such a difficult talk in such a short span of time. You have delivered the key messages. As far as possible, take out the cultures before starting antibiotics and use antibiotics according to the antibiotic program, or ampullary therapy should be chosen based on the patient's and current bacteria prevalent there. And after the culture report, please de-escalate also. And some of the antibiotics should be used only after talking to expert or taking permission from the authorities. So thank you, Madam. If audience have any questions, they are most welcome. Thank you, Madam. Wonderful talk. And you just reminded me my lecture. So I cannot resist. आपने बोल दिया, मैं resist नहीं कर सकता. So for you guys, what is stewardship? इतनी देर से बात हो रही थी. What is stewardship? You all practice stewardship in your home or not? You all practice stewardship whenever you go anywhere? You practice or not? Stewardship is managing the thing the most appropriately. And this word came from the Navy. तो जब आपको पता होता है कि अब रिसोर्स खत्म है, नया नहीं आएगा, जब आपको पता है कि रिक्वायरमेंट अभी चलती जाएगी, then whatever resources are there, then you try to use optimally. And because of that, किसी और जगह पे स्टीवर्डशिप प्रोग्राम नहीं आया, मोटापे की दवा पे नहीं आया.
डायबिटीज पर नहीं आया. Reason is the drugs are coming like anything. Here the drugs are have stopped coming. Now only the Me Too drugs are coming. So what is like beta lactams? So one beta lactam you have just change something and the new drug. तो हम लोग खुश हो जाते हैं नई दवा आ गई. नई दवा नहीं है, वही है, खाली नए फार्म में आ गई है बेवकूफ़ बनाने के लिए. एंड इस वजह से जब आपके पास रिजर्व कम है, रिजर्व एकदम है नहीं, जब आपका लग रहा है कि अब और दो तरह से मार पड़ रही, रिजर्व खत्म हो रहा है और एनिमी मजबूत हो रहा है, तो वो मजबूत हो रहा है तो नेचुरली अब हमको जो है अपने में ज़्यादा जितना भी हमारे पास रिजर्व है उसको अच्छे से यूज़ करना है. एंड बिकॉज ऑफ दैट द रोल ऑफ द मैडम साहब इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. बिकॉज स्टीवर्डशिप अगर आप अप्लाई करते हो तो वाट एवर रिसोर्सेज आर देयर, वाट एवर एंटीबायोटिक्स आर देयर, रखो, अगर ज़रूरत है तभी दो. और तीसरा है रिजर्व. रिजर्व में हाथ न लगाओ जब तक कि उसकी ज़रूरत न पड़े. And that is how these categories have been divided. And worst thing is, most of the drugs which are being misused, they are from reserve category. Yes. And that is the worst thing. And that we have to change the mindset. We have to play with the access, play. Watch, play with little bit cautious. But reserve, that should be with the guidance of the seniors and all these, and the guidance of the microbiologists, and the guidance of all these. Then only you should go. That is the message. Thank you. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you. Very nice talk, ma'am. Ma'am, one thing I want to add. One thing, ma'am. Initially, जैसे सर ने बताया कि ये कैटेगरी जो डिवाइड की इन्होंने आवारे, तो एक एक्चुअली में जिस इनिशियली हम लोग जब भी इमरजेंसी में पेशेंट आता है तो उसको हम भूल जाते हैं, सीधे आरपी पहुंच जाते हैं. पहुँचते सिफ्ट्रैक्सोन और एमिका उस तरीके के ड्रग्स दिखते हैं जो ऑलरेडी वो रजिस्टर रहती हैं, और रहती हर इंस्टीट्यूट में अपना एक एंटीबायोटिक पॉलिसी होती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में जैसे इमरजेंसी पहुँचते ही इसी एंटीबायोटिक से स्टार्टिंग होती है. तो एक वो होना चाहिए कि हम बेसिक एंटीबायोटिक से शुरू करें, फिर स्लोली आगे फिर नहीं आ रहा है तो उसको कॉशियसली दूसरे पे आएँ और उस पर जो जिससे रेजिस्टेंट डेवलप हो सकता है, फिर लास्ट में जो रिजर्व है रिजर्व को टच करें. तो ये एक अच्छा हो रहता है अगर इस तरीके से हम लोग चलें. Just are there any questions from the audience if the chairpersons can? Basically, this is not like this कि we are writing ceftriaxone or amikacin, because we have a culture of that society. Like if I talk about UTI, fluoroquinolones are the drug of choice, because we have seen in the society they are responding to that treatment. Suppose a patient of perforation peritonitis comes to emergency, then what are our three requirements? One is for gram positive, negative, and anaerobes. Anaerobes, yeah, right. Basic drugs are ceftriaxone. If creatinine is normal, then amikacin and metrogyl. So these are not the reserved drugs. Then we have to switch over according to the cultures. We have to give some antibiotic so that the sepsis cannot progress to that. So these are No, sir. And actually, जो you are correct. Empirical therapy is chosen on the site of the infection. Yes. What are the prevalent bacteria? If antibiogram is available, and also on the underlying comorbidities and renal lymphatic dysfunction. So you are very correct. It depends on the geographical location also. Drug which is effective and outside may not be effective here. Like so, you have said so. सबसे ज़्यादा खराबी ये है इंडिया में everybody is doctor. तो जो आप दे रहे हो वो पहले से सब लेके आया और आप मजबूरी है आपकी कि उससे लेवल हाई पे जाना. That's कोई what दिक्कत नहीं है. I would like to speak regarding this. See, about antibiotic stewardship, there is some of the hospitals in Western countries, they have very clear-cut policy of microbiology hotline. Very clear. Where I used to work as a registrar 15 years back in UK, they had a micro hotline. Anytime if patient goes to sepsis, you just call on that number. There is a 24-hour available registrar. They have an antibiogram with them. They have an AST with them. Just ask them, give them clinical history. They will tell you, start this antibiotic, this dose. Straight. You are not allowed to prescribe second line of drug. Only first line basic drug, gentamicin, amikacin, nitrofurantoin, or like levofloxacin, very simple drug. Even quinolones are to be started after consulting. So that is like the clinical microbiologists called antibiotic jar there.
We don't have any antibiotic jar Yeah. in this university. Probably in future days. We have a jar which everyone dips into. Yeah, that's what we have a liberty to start. We have a liberty to start anything, which is actually should be restricted, in my opinion. This should be restricted based on this should be restricted based on the microbiology reports or micro hotline in future, so that they can guide us in the best way. So not to unnecessarily use the drugs, or not to prescribe, or not to do under treatment. That is very important component. So can I just give you a little example here? While we would love to do that, be the clinical microbiologist, guide antibiotic therapy across these 4,500 inpatients, that will be a little bit of a pipe dream. But let me tell you the major problem. Major problem is that to guide therapy, we need facts. Who is going to generate the fact? The clinician. Yeah, ma'am. The clinician has to draw the culture. The clinician has to send the culture in a way that I get something useful out of that culture and can give you the feedback from that culture. Our major problem, sorry, I'm not contradicting anything you're saying. I'm just saying though it's a chicken and egg story, really we have to start with the egg. We have to say, do good quality culture practice. Because to create that antibiogram, to create that good quality feedback system, because in sepsis, we are talking here for sepsis, there is no room to wait. That was made very clear to us in the morning. Empirical has to be started. What will guide the empirical therapy? Your antibiogram. What will guide the antibiogram? The antibiotic the cultures you have sent through the year, through the few months, which have yielded useful, good quality results, which means culture at the correct time before giving that antibiotic dose. Do good culture practices. Clean that skin. Clean. Disinfect your hands. आपके हाथ में कॉन्स होता है. कोई नहीं पैदा हुआ है sterile hands के साथ. Ma'am, that's the preventive part. Like we are talking of therapeutic part. No, therapeutic. Doctor sir, if we are talking of AMSP in sepsis, see my topic is sepsis. So I am very sure sepsis में empirical में नहीं बंद करूँगी. बंद तो नहीं करूँगी. Many empirical has to be given. And हम जब next step to जाएंगे. But you should de-escalate guidance after the reports. पे. So de-escalation के लिए आपका quality of, you are responsible for the quality of your report in many ways. सर एक मिनट Oh my God. ये बताओ शादी के लिए लड़की देखने में ज़्यादा दिमाग लगाना चाहिए कि एंटीबायोटिक चूज करने में ज़्यादा दिमाग लगाना चाहिए? जल्दी बताओ. पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही नहीं है, दूसरा ऑप्शन सही है. दूसरा है अगर मान लो और दूसरा और डिफिकल्ट सवाल है, ऑलरेडी जो शादीशुदा है अब उसको दूसरी शादी के लिए, अगर 2 शादी हैं तो तीसरी शादी, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर देयर, द एडिशन ऑफ द एंटीबायोटिक नीड्स मोर वाइजनेस. नंबर 1. और यहीं पे हम लोग फार्मा तो चूँकि पढ़ के बस 3rd ईयर में भूल गए हैं. और फिर जब तो इसको जाके पढ़ो. रीज़न है कि ये कॉम्बिनेशन जो करते हो ये गड़बड़ हो जाता है. तो यू चूज राइट एंटीबायोटिक इनिशियली, बट अनफॉर्चुनेटली द कॉम्बिनेशन द सेकेंड बिकॉज एंटागोनिस्टिक. तो एकदम से जाके अगर साइडल है, नोबडी इस जगह पे काम करती है, इस जगह पे, एंड देन यू सी कि वास्तव में एक अगर देंगे तो दूसरे का इफेक्ट हैम्पर तो नहीं होगा. इतना खाली जान जाओ, दैट इज एंड द सक्सेस इज योर्स. थैंक यू. Thank you, Vimla, for very nice and very interesting lecture. One more point I would like to, since I see microbiologists and clinicians sitting together, and pharmacologists, sorry. तो मैं कौन बोल सकता है भाई? So one more point I would like to raise here. As you know that MDR TB is also rising up, and 2 of the repurposed drug for MDR TB, another very good drug for MDR TB, which has been recently defined and everything has been categorized. One is a fluoroquinolone and another is a linezolid. Initially they were used as antibiotics. They were not used as anti-TB drugs. But now they are the major drug for
drug resistant, when we talk of MDR, XDR, pre-XDR TB. So what I would suggest to microbiologists also, and to clinicians and to all sorts of things, that while using these two antibiotics, you have to take care of. Because once it has been, researchers have shown, even 10 days of fluoroquinolone can create a fluoroquinolone resistance, and when it will be required. So, and even government is thinking a lot about this, that how not to use most of the pneumonia guidelines. We are pleading them that please remove these antibiotics from these ordinary infections, so that at least these drugs can be saved and can be used as a life-saving measure whenever it requires. Thank you, Vimla, for this. Thank you for that. Just a small message, outside sepsis, we have seen that ceftriaxone is prescribed to each and every patient, whether he is suffering from infection or not. And there was one cartoon not circulating in WhatsApp, that fever is not a sign of ceftriaxone deficiency. So don't use it each and every patient. Use when it is required. Thank you so much, madam. Thank you for your lecture. And I'm very glad that we had so much discussion. I was not expecting. Thank you, Dr. We close the session now. Thank you. Thank you, ma'am. That was a wonderful seminar. Now I would like to request Professor Rajendra Prasad sir and Professor Ved Prakash sir to come on the stage and facilitate our chairpersons and speakers. I would like to request Dr. Vimla Venkatesh ma'am to come on the stage. Now I'd like to request them to felicitate the chairpersons, Dr. K.K. Salvani sir, Dr. Namrarad Rawat sir, Dr. R.K. Dikshit sir, moving ahead, I would like to invite chairpersons for our next session, Dr. S.N.S. Yadav sir, Senior Consultant, Department of Nephrology, Hind Hospital, Lucknow, Dr. B.P. Singh sir, Professor, Department of Urology, KGMU, Dr. Manoj Yadav, Professor, Department of Urology, KGMU. Hello. Yes. Yeah. Good evening, everyone. So this lecture is on urosepsis, current management practices by Professor Vishwajit Singh from Department of Urology, and he is recipient of Vigyan Ratan Award and Vigyan Gaurav Award by Council of Science and Technology, Government of UP, and he has like hundreds of publications and a lot of citations, and he has been very actively working consultant in our department, and a lot of experience in renal transplant and nephrology as well as urosepsis. Thank you, sir. We started lecture. Thank you. Thank you. Thank you. I thank Dr. Ved Prakash, who has given me this opportunity to be here for this prestigious lecture. And I also am very happy to see Dr. S.N.S. Yadav, sir, after a long time. Welcome you, sir. And thank you, Dr. Bhupendra, Dr. Manoj, be here as a chairperson.
So my topic is urosepsis, current management practice. So many of the speakers already have spoken on the related subject. So there may be repetition of some of the slides. So, and I have tried to make the presentation for the general, for the all specialty, not only for the urology. I hope you will like it. So, urosepsis simply is the infection of the urinary tract, and these infections include both upper and the lower urinary tracts. The inflammatory response can lead to multi-organ dysfunction, failure, and even death also. So this diagram is showing the that for the practical purposes, the upper and the lower urinary tract. This hey सुनो इसको बताओ भाई कैसे होता है हाँ सबसे पीछे thank you I'm sorry. So upper and the lower urinary tract. The upper urinary tract above the bladder is the upper urinary tract, and that means the clinical word we say the upper tract sepsis and the lower tract sepsis. The symptoms are more or less same, and the principle of the treatment is also same. Life-threatening in the neglected or unrecognized sepsis, or the associated pathology further complicates the issue, like if they associated with the stone, tuberculosis, fungal, neurogenic bladder, and congenital anomalies. So sepsis, as everyone knows, that life-threatening organ dysfunction caused by dysregulated host response to infection. So clinically, organ dysfunction can be quickly assessed by quick SOFA score. SOFA score was already talked, but for the clinical purposes, we can see the respiratory rate if it is more than 22 per minute, altered mentation or sensorium, and systolic blood pressure if 100 millimeter mercury or less, despite the patient has the good hydration. So these are the three parameters. If two of these present, then we should go aggressively to treat the patient. The septic shock is circulatory, cellular, and metabolic abnormality that are associated with a greater risk of mortality. So our aim, once we go for the quick SOFA score, then our aim should be to have a mean arterial pressure of 65 millimeter mercury or greater, and on ABG, the lactates, if it is more than 2, then we should take this patient very aggressively. This is already talked by Dr. R.K. Singh. This is not for the this is for the intense visit in the ICU, taking so many parameters. So going for the urosepsis treatment of urosepsis, we have to take account of the what are the host factors, because they complicate the issue. Like the advanced stage, suppose the urosepsis in young male, 25 years, and the same kind of sepsis in the old age, 80 years. There are a lot of differences. So advanced age, anatomic abnormality, poor nutritional status, chronic smoking, immunodeficiency states, chronic indwelling catheters, chronic steroid use, infected endogenous or exogenous materials or stent, distant coexistent infection, prolonged hospitalization, and spinal or bedridden patients, they are at the increased risk. They complicate the issue. So the urosepsis in the body, whether it is upper tract or lower tract, the basic principle remains the treatment. Like the quick identification, assessment, and resuscitation. Like I already said, we have to recognize the early SOFA score, quick SOFA score. The assessment and resuscitation very important, and resuscitation for the initially for the stabilization of the hemodynamics. Little or no manipulation of urinary tract. This word is very important. What is happening that the patient comes in the infection with the septicemia also sometimes, but somehow the hemodynamically they are on the borderline, and many times we put catheters or some kind of the drains or some endourologic manipulation. That should not be done. If they are required, it should be by gentle once attempt. So that little or no manipulation urinary tract, because that flare of the septicemia. Repeated or multiple cultures to be taken on the intervals.
proper drainage of the pus must be ensured. Suppose the patient has the pyonephrosis or infected hydronephrosis, we have to ensure that a drain should be in the system and it should drain adequately also. The supportive care in the form of hydration, antibacterial and nutrition, and care of comorbidity like the diabetes, hypertension, CAD, COPD, and of course the good imaging of the whole of the urinary system is required. Diagnostic modality clinically and microbiological like the urine culture, blood culture, at least 2 blood culture. In the severe sepsis, 2 blood culture is recommended. Drain fluid analysis for the culture. AFV and fungal, that we are, sepsis means most of the time we say, yes, statistically also, it is 80% time it is bacterial. So we forget about the AFV and fungal, that is equally important. We should always keep in mind about the AFV and fungal. And blood investigations as a routine blood investigations, and imaging in the form of the diagnostic or imagings are 2 types. Suppose we send the patient for the ultrasonography and ultrasonologist, they find that yes, there is a hydronephrosis and there is a pus also. So the system should be that at that time only he should put a tube also. So the imaging should be diagnostic and overcome then therapeutic also. Regarding the markers, already said, I will not go in detail for the markers, but one pro-adenomedullin, I was searching the literature, and it is another septic marker, potential marker, rises in early phase of septic shock when there is a hyperdynamic kind of circulation. So this, in the coming time, this can be also a promising marker. So this is about the spectrum of disease where we have the urinary sepsis, like the pyelonephritis, renal abscesses, perinephric abscesses, emphysematous pyelonephritis, pyonephrosis, xanthoglomerular pyelonephritis, tuberculous pyonephrosis, renal malakoplakia, and other conditions or other uncommon conditions. I think most of you must have familiar with the names, but these entities are the little bit different from each other. There can be some variations in the guideline of the treatment, but I'll take one by one. The acute pyelonephritis is a very common clinical condition, and the clinical diagnosis is most important, supported by the radiological diagnosis. And the patient, if he recognized early, then patient can have the good outcome. If the patient not recognized early, then patient will have further progression of the disease and can have the pus formation. This is the treatment guideline. I was requested by Dr. Ved Prakash that I have to go for the current practice management. So current practice management, because there are so spectrum of the urosepsis, the disease producing the urosepsis. So initially infection starts, and there is difference in the little bit difference of the management also. So by and large, the pyelonephritis, if the sepsis is severe, then definitely they need admission and parenteral antibiotics. OPD patients, it depends on the clinician that if thinks the patient is can be managed at the OPD basis, then they to be treated by the oral antibiotics. So this is the guideline. Next is the renal abscess. This is the pyelonephritis is the infection of the whole of the parenchyma. If the limited portion of the parenchyma have the pus formation, and it is very toxic condition. So abscess or carbuncle. Carbuncle is a condition for the skin, but in the kidney also we have the same kind of condition, and it is the collection of purulent material confined to the renal parenchyma, and it is one of the very toxic condition, and the patient definitely has to be recognized, and if treated at the correct time, resuscitated correct time, then patient have the good outcome. This is about the management outline plan. We have to go for the imaging. On the imaging, if the size of the abscess is less than 3 centimeter, then the clinician, then it is recommended also that you go for the conservative treatment in the form of the antibiotic, hydration, and supportive care. And the most of the time, on the serial ultrasonography or CT scan, the patient becomes all right. But if the size of the abscess is 3 to 5 centimeter, then we have to take account of the host factor.
Suppose the patient is of old age or have the comorbidity like diabetes, hypertension, then we go for some kind of intervention. If the patient is young, without comorbidity, no immunodeficiency states, then these are the patients, they also to be tried for the conservative treatment. But if the size of the abscess is more than 5 centimeters, then definitely these are the patients, they need to be either the percutaneous drainage of the abscess or open drainage. So these are the guidelines for the management of the renal abscesses. Then perinephric abscess. Renal abscess is the abscess confined to the kidney, but once the abscess forms inside the kidney and it ruptures and go in the perirenal area, means around the kidney, then the condition is a little bit different. You can appreciate in the next diagram. Here you can see there is a stone in the pelvis and the kidney is dilated and there is a suppuration, parenchymal pus formation in the form of pyelonephrosis. If it is not treated, then it progress to the perinephric abscess. Here you can see that this has gone to the perinephric abscess, and this line is the Gerota fascia. Suppose at this stage also you don't treat the patient, then they will go beyond this fascia. This will rupture the fascia, Gerota fascia, and then it will call the paranephric abscess. So these are the differences in the terminology. Then surgeon can go for the open drainage also. But nowadays the treatment of choice is percutaneous insertion of a tube, and that is kept for the quite some time, 1 week or 2 weeks, whatever. If there is a when the pus stops coming and the parameters become better, then at that time we remove the tubes. Then there is one entity called the emphysematous pyelonephritis. The word is, because this is department of the pulmonary medicine, I think everybody will be familiar with the emphysematous. Emphysema means accumulation of the air. But here is what happens in the kidney. Kidney also there is accumulation because of infection. There is accumulation of the air. You can see here in the diagram. This is CT scan. You can see here the lot of air inside the system. The opposite kidney is normal. So this kind of the pyelonephritis, this is this has poor prognosis, and if it is not recognized, treated, the 43% mortality. 43%, particularly in the diabetics and hypertension. So this is one of the entity, and that they have to be recognized. We have guidelines. The guidelines, according to these guidelines, the condition has to be treated. The recognition is very important because the 10% patient can have no history of diabetes. Usually happens in the diabetes. This is about the guideline that in the if the air is very limited, a small amount of air in the parenchyma, that can be treated by the conservative treatment. Otherwise, percutaneous insertion of 1 tube, 2 tubes or multiple tubes in the multiple pockets along with the antibiotics. And see, the recommendation is the carbapenem and vancomycin. This is the recommendation, international recommendation. Just now before this session, there was some debate over the choice of antibiotics. But there are entities, they already are so dangerous. The mortality, there is so high mortality, don't have time, patient progresses very rapidly. In those situations, you have to go for the higher antibiotic because according to the international guidelines. And you may have to go for the repeat imaging, and if there is a further progression of the disease, then in those situations you have to go for the emergency nephrectomy. And I already said at the beginning that the mortality rate, in spite of the good center, good hands, 43% emphysematous pyelonephritis. The pyelonephrosis word, I think it will be very familiar to everyone. Pyelonephrosis is the progressive suppurative parenchymal damage or may not be associated with septic shock. Early cases needs management by the ultrasound or CT guided percutaneous drainage. Kidney salvage depends upon stage of the disease. Associated cause must be addressed, like there is a stone, there can be infection. Stone, there can be stricture. And nephrectomy is needed in the end stage of pyelonephrosis. And safety of other kidney is also to be ensured. Suppose one kidney has pyelonephrosis, then other kidney also have some problem. Then you have to be very aggressive in those situations. But in end stage, it definitely requires nephrectomy, and you can appreciate in this specimen how much the pus inside the
incisive specimen. This much of the a patient of the pyenephrosis with this much of the pus survives if the treatment is started at the proper time and intervention is also done at the proper time. Then this is our third world country, India, and a progressive country, and we have a very high incidence of the tuberculosis in the society. So tuberculosis, when the question comes for the tuberculosis, it is always assumed that tuberculosis, that pulmonary tuberculosis. But being a the urologist or nephrologist here, we treat the genitourinary tuberculosis, tuberculosis of the kidney. So high index of clinical suspicion is very important while treating the patient. Associated bacterial infection to be treated. Tuberculosis pyenephrosis can have bacterial infection also. Initial pus drainage to be ensured and demonstration of the AFV, preoperative ATT for the 4 to 6 weeks has to be given, and surgical intervention if it is a non-functioning kidney. Then there is a terminology, what I am telling you, these are the words, the treatment guidelines more or less remains the same. Suppose I say hydronephrosis means the dilatation of the kidney, and infected hydronephrosis means the infection inside the pelvic calyceal system inside the kidney. But when I say the pyenephrosis, it is the infection of the parenchyma, pus in the parenchyma. But the most important is the radiologist can identify very easily what is infected hydronephrosis, and being as a clinician, we also have a lot of experience for the ultrasonography. You can see here in the picture, the internal echo, you can see here, there is no classical lucency. And now, as in ultrasonography, you can see here, there is a lot of debris, echogenic debris, and that suggests that there is an infection. Once there is infection, that always to be drained. Naturally, here also a drain was inserted, a tube was inserted in the kidney. In the next of the diagram, you can see we have done the dye study. Here you can see the system. There is a tube inside the system, and these are all the calyces. And once you intervene, then definitely the outcome remains better. Here in the diagram, you can appreciate what is the difference in the terminology. Here, hydronephrosis to the parenchyma thinning, because hydronephrosis, this is the parenchyma. This is small thin of the parenchyma because of hydronephrosis. When it gets infected, this is called the infected hydronephrosis. Then there are some other condition, because some other condition like the xanthogranulomatosis pyelonephritis, they also need to be recognized and treated. Malakoplakia is a condition that also need to be recognized and treated. And there are some special features like operative urosepsis, transplant kidney, UTI in pregnancy, sepsis in the spinal cord injured patient, and prostatic abscess. I'll go to the last slide because time is over, probably going to be over. So this is a prostatic abscess. As I said in the beginning, prostate is very common organ. Everyone knows the prostate. But once there is abscess inside the prostate, here the treatment plan is against the basic rule. I said there should not be any manipulation of the urinary tract because of the flare of the septicemia. But prostate is such in location. If there is a small prostatic abscess, then they can be treated by conservative treatment. But if it is a large abscess, suppose 4 centimeter, 5 centimeter abscess, then if you go for the transrectal drainage through rectum, there will be formation of the urethral fistula, but here we have to go transurethral by taking the resectoscope, जो TURP करते हैं, resectoscope लेके जाना पड़ता है, and we have to do deroofing, means the most prominent portion that has to be deroofed, unroofing, and once you do it, then the abscess start coming through the urethra. So it is against what I said, that there should be minimal or no manipulation of the genitourinary tract, but here in prostatic abscess, we have to go through the genitourinary tract, we have to put an endoscope, we have to go for the resection, and there can be flare of the septicemia. So in the conclusion,
Clinically, quick identification is very important. Stabilization of hemodynamics to be done. Adequate drainage of the urinary system that also to be ensured. Good imaging as early as possible. Proper or adequate drainage of the pus if there is pus in the system that to be done. Effective antibacterial or antifungals. You could have realized in my slides that I have not focused much on the antibiotics. Antibiotics, antifungal, I have not done. I have not taken what is the dose requirement. Antibiotic treatment is very small part of treating the sepsis. It is the identification of the condition and investigation and to ensure the good drainage of the pus or the inflammatory fluid. That is very important. So effective antibacterial, antifungals and care of the associated comorbidity like the diabetes or hypertension. And if suppose you take all these cares, then you ensure the final outcome. Thank you. Dr. Biswajit for giving lecture on the urosepsis. Really, this is a very major cause of the death, especially in the ICU setups. So, your message is to early recognize the condition, Yes, early interventions, choose proper antibiotics, and do surgical care earliest if possible to prevent the multi-organ failure Yes, of the organ. Multi-organ failure leads to the death. In the ICU setups, mostly urosepsis is there, and most of the patients have all the comorbid conditions like diabetes, hypertension, old age, and malnutrition. Yes, sir. So, we have to correct all the things, comorbidity, to prevent the mortality and morbidity. And there is a lot of cost of the treatment, especially in the ICU setups, especially in the private sectors. They are taking lakhs of the rupees per day. So, early detection is the most common thing. Yes, sir. And preventive measures should be taken. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. You are a very nice lecture, and you have almost described every condition in urology. It was a pleasure. It was a pleasure to present under the chairmanship of Dr. Bhupendra. Yeah, sir. So, no, sir. I'm the junior, so please, this is very. So it's my privilege. In fact, see, the one condition which we are, we probably, we should describe this. This is like standard urosepsis because of different conditions. The classical urosepsis rapidly developing very fast, and that time, we have, hours to start antibiotics. Yes, we have definitely. very emergent condition. Patient have classical shivering. Meanwhile, the operation or after the operation, if they have a pus inside, or you are operating under high pressure of stone is infected, and they classically blood pressure drops within an hour of operation. And so in those conditions, like we have to just go on empirical antibiotics, the best standard available with us. Yes. That's because there every hour mortality increases otherwise. Patient goes into frank septic shock within hours. Yes, and that's like we encounter in urological practice after operations. That is a different condition. Like that's we want to emphasize that this kind of patient we shift to ICU after operation many times. And you must be, treating them. So that's another condition I want to just highlight. Dr. Manoj, you want to? Thank you. Basically, I was talking to the residents of this department. So why urosepsis is important for them? I am just asking, saying to the residents. One urological procedure, that is the placement of urethral catheter. It should not be taken lightly. If in a one go catheter is not going, take help of urologist, because whenever we manipulate any obstructed system repeatedly, then a simple procedure of catheter placement can lead to septic shock. So be aware of this. Anywhere in the urinary tract, if there is any obstruction, it should be taken as highly emergent condition, and a specialist should always be called. You always give us call when there is urethral rupture or you are not able to. So just one guideline is try once
in urethra. Yes, sir, don't If manipulate. it is not going, just give a call. We have lot of residents and we are always there. So for you, this. And second thing, when fever is not responding to your treatment, nowadays we have cross-sectional studies. We get a CT scan, at least a non-contrast CT. We can find this pyelonephritis or another thing, any stone. But a clinical stigma of pain, tenderness, and fever is classical triad for pyelonephritis. If a patient is with diabetes, look for these clinical symptoms, because nowadays nobody is taken care of, nobody wants to touch the patient for any clinical symptoms. So that's how urosepsis is important for ICU management. Yeah, like see, we are mostly, yeah, that's what Dr. Manoj is saying. We are mostly still relying, our clinical practice. Sometimes, we don't have time to, do CT scans or ultrasound. We just clinically admit the patient to start treatment for pyelonephritis. That's what happened. And because in urine, what happens, like in all of the urinary tract, the vascularity is very high. There's apart from that, there are connections, pyelolymphatic connections. So any infection, any obstruction, any high pressure in the urinary tract, it spills to blood very fast. And so that's why we say that don't traumatize the urethra, because the urethra has a high vascularity. Apart from the upper tract has a lymphatic connections. So the poison spills into blood very fast. And that's why you want to make a very nice drainage without traumatizing from appropriate part, either ultrasound guided or, we with our experience with instrumentation. That's why, thank you very much. Thank you. Thank you, sir, for sharing such deep insight. Now I'd like to request Professor Rajendra Prasad, sir, and Professor Ved Prakash, sir, to come on the stage and facilitate our speaker, Dr. Vishwajit Singh, sir. I would like them to facilitate our chairpersons. Dr. BP Singh, sir. Dr. SNS Yadav, sir. Dr. Manoj Yadav, sir. Moving ahead with our last session of the evening, I would like to call on stage the chairpersons, Dr. Raj Kushwaha, sir, Professor, Department of Respiratory Medicine, KGMU, Dr. Prashant Gupta, sir, Professor Dr. R.A.S. Kushwaha, sir, Professor, Department of Respiratory Medicine and KGMU, Dr. Prashant Gupta, sir, Professor, Department of Microbiology, KGMU, Dr. Nikhil Gupta, sir, Associate Professor, Department of General Medicine, and Dr. Vivek Singh, sir, Department of Urology, KGMU. सर कौन सा है सर कौन सा है ये जस्ट So good evening, everybody. For this session, before
Professor Ved Prakash, I invite Dr. Devesh Kumar Srivastava sir. He is from Susrut Arogyam. He will be explaining Ayurvedic aspect of the sepsis. Sir. I'm reading, just reading, sir. Sir is specialized for Panchkarm, Kerala massage, acupressure, acupuncture, auriculotherapy, yoga, naturopathy, relaxation therapy, pain management therapy. Sir is a retired medical officer, Ayush Department, Uttar Pradesh. So, sir will be explaining about the Ayurvedic aspect of sepsis. So, Ayurveda is for healthy and for disease also. Allopathy always talks about the disease. So, sir will also tell about how to remain healthy. Who is healthy? So, how to remain healthy. Thank So, you, sir, please. Thank you so much. थैंक यू सो मच डॉक्टर वेदपाल जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने हमें इनवाइट किया, आज आयुष डिपार्टमेंट को इनवाइट किया KGMC में, उसके लिए मैं थैंकफुल होऊंगा। और मैं अभी सीनियर मेडिकल ऑफिसर आयुष डिपार्टमेंट से अभी रिटायर हुआ हूँ और मैंने एक प्रयास किया है कि चाहे जो भी हम लोगों का एक मिशन है, एलोपैथ डॉक्टर हो या आयुर्वेद डॉक्टर हो, बस मरीज़ को स्वस्थ बनाए रखना है, उस मिशन पे काम कर रहे हैं। तो अभी मैंने ये डेवलप किया है कि बॉडी में 1000 पॉइंट्स होते हैं, मर्म होते हैं, उन सबको जो है कैसे स्टिमुलेट करके नेचुरली कैसे व्यक्ति को जो लंबे समय से बीमार पड़े रहते हैं उन लोगों को कैसे नेचुरली जो है स्वस्थ बनाया जाए। तो उसके लिए एक रिलैक्सेशन थेरेपी डेवलप किया है जो उत्तर प्रदेश के 2 डिपार्टमेंट में चल रही है, ग्रामीण विकास से विकलांग कल्याण में। ये एक रोजगार परक योजना है जो हम अपने वार्ड बॉय जो वर्कर हैं अपने हॉस्पिटल के, उन लोगों को भी सिखा के मरीज़ को जो है उसको हम स्वस्थ बना सकते हैं। तो मेन चीज़ है जो बात हो रही है सेप्सिस की, तो हमारे अंदर कहा गया है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण मातुर से रोग मुक्त। स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखना ये आज से नहीं, हजारों शरीर भी अगर हो रहा है, जैसे सेप्सिस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है जिसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसको हम क्या करेंगे, पहले से ही उसको, अगर वैसे तो पता नहीं चलता है इसमें सेप्सिस में कि क्या हो गया तब पता चलता है, तो भी हम जो है उसकी जीर्णता को, उसकी जो सीवियरिटी को है वो आयुर्वेद से हम कम कर सकते हैं। उसमें बहुत अच्छा रोल है नीम का, गिलोय का, एलोवेरा का और मंजिष्ठा का। बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जिनको हम ठीक कर सकते हैं, उनको दे के उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। हर डिसीज़ पे हमारे पास आयुर्वेद में औषधियाँ हैं जिनके माध्यम से हम पूर्ण रूप से इसको स्वस्थ बना सकते हैं। मेन चीज़ होती है बॉडी में जब इम्यूनिटी कम होती है, जो पेट में जो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और ये मैक्सिमम समस्या 99% लोगों की हो जाती है। उसके लिए फाइबरस फूड्स अगर खा रहे हैं, हमारा शरीर 2 तत्वों से बना हुआ है, अल्कलाइन और एसिडिक। एसिडिक जो हमारे अनाज से होता है, अल्कलाइन जो हमको मिलता है सारी फल फूल सब्जियों से। अगर हम उसकी प्रचुर मात्रा में सेवन करते हैं तो हमारा फ्लश आउट ठीक से जो है पूरा पेट बना रहेगा। और इस सब के लिए पंचकर्म जो होता है, पंचकर्म से पूरा बॉडी रेजुनेट होती है। किसी भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, चेस्ट की प्रॉब्लम है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, वो पंचकर्म शोधन से, मैं पंचकर्म का भी विशेषज्ञ हूँ, तो ये सारी चीज़ इस्टेब्लिश मैंने गोमती नगर में विरामखंड 3 में ये इस्टेब्लिश किया। ये हमारा नहीं, ये आप सब लोगों का हॉस्पिटल है, कोई भी आके, और जितने भी हैं सबके लिए वो हॉस्पिटल है, सब लोग आइए। वहाँ पे पूरा पंचकर्म हमने करवा रखा है, सारी थेरेपिस्ट रखे हुए, तो वहाँ पे स्नेहन स्वेदन पूरी बॉडी का मसाज करके भाप दी जाती है। उसके बाद वमन विरेचन, 5 कर्म होते हैं पंचकर्म में, वमन विरेचन नस्य बस्ती और रक्तमोक्षण। इसके माध्यम से पूरी शरीर का क्लींजिंग होता है और उसको जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ बना सकते हैं। एलोपैथ ये हमारा मॉडर्न साइड है, ये हमारा अंगूठा है, हमेशा हम लोगों ने माना है सब ये हमारा अंगूठा है, मुट्ठी लेकिन हमारी सी बंदेगी, क्योंकि इसमें आहार,
जितने मसाले हैं उन सब के माध्यम से हम व्यक्ति को लाइव करते हैं, दिनचर्या बताते हैं कि कैसे हमारे लोग स्वस्थ बने रहें। और दूसरा पार्ट ये है कि बस जो है ये रिलैक्सेशन थेरेपी से जो पूरा बॉडी मसाज दी जाती है, ये सब चीज़ें हम वहाँ पे गोमती नगर में करा रहे हैं। इसको हम जोड़ने की कोशिश किया था, अभी विपिन सर से भी बात हुई थी, वाइस चांसलर जो थे, तो उनसे बातें हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको हम न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट से भी जोड़ेंगे। डॉक्टर विवेक अग्रवाल से भी बात हुई थी, फिर अभी पूरी बात नहीं हुई, लेकिन आप लोगों के साथ मैं मिलकर रहूँगा और इसको आगे बढ़ाऊँगा। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. I think in research mode, Any you can questions, create sir? some data, and then the acceptance will be at the larger scale. Thank you, sir. सर, आप जैसा अभी आपने बहुत से प्लांट्स का जिक्र किया। जी सर। तो मैं वेद को ये जो वेद एज ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, जी सर, जी। कहना चाहता हूँ, जैसे अभी हम पहले लोगों को वेलकम करने के लिए बुके देते थे। जी। तो बुके में क्या होता था, कर गया, एक दिन रहा, सूख गया। बिल्कुल फिर सर। हम लोगों ने नए पद्धति अपनाई कि ग्रीन इंडिया बनाने के लिए हमने जो है वो प्लांट्स देने शुरू किए। जी सर। और अब मैं इसका बहुत जगह में प्रचार कर रहा हूँ। जी सर। मैं पिछली कुछ दिनों पहले पीजीआई में था। जी सर। मुझे वो लोग प्लांट्स दे रहे थे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, मुझे ये मत दो। मुझे वहाँ पे मैंने देखा कि एक एलोवेरा का भी प्लांट था। सर, तो सर। मैंने कहा मुझको ये दो। सर। तो उन्होंने, धीमन साहब ने कहा भाई डॉक्टर साहब जब कह रहे हैं तो उनको यही दो। तो मेरा कहने का मतलब है, जब हम अब ये जो हम प्लांट्स देते हैं, ये भी बहुत लोगों के गार्डन जाके रख देते हैं, कुछ दिनों बाद सूख जाता है। मेरी सलाह ये है, आई एग्री विद यू सर, अपनी इम्यूनिटी और सब कुछ बढ़ाने के लिए एक तुलसी का जो पेड़ होता है वो आप बुके में उसमें दिया करिए, और दूसरा जो है अगर वो देना है तो जो एलोवेरा का दिया करिए। सर वो मेरे वो यहाँ पे जब भी कोई प्रोग्राम होगा, वेद सर को बता रहा हूँ, जब भी कोई प्रोग्राम है ये मेरी तरफ से दिया जाएगा। मेरी तरफ से प्लांट सबको दिया जाएगा। मेरे बेटे भी यहाँ बैठे हुए हैं, डॉक्टर निखिल गुप्ता जी सर। ये मेरे से देखेंगे कि मेरे घर में कई तुलसी के पेड़ लगे गमलों में, कई एलोवेरा के। सर आप थोड़ी सी अगर जगह यहाँ उपलब्ध कराइए तो मैं मानव वाटिका बना दूंगा। मानव वाटिका, उसमें ब्रेन में क्या यूज होता है, शंख पुष्पी, ब्राह्मी, पता नहीं आँख के लिए गाजर। खाते हैं कि नहीं खाते हैं, लेकिन मैं तो खाता हूँ सर। और मुझे लगता है कुशवाहा साहब जी सर, उससे जो है मेरे को बड़ा आराम सा। बहुत सर, बहुत बड़ी बात बताइए। और ये मानव वाटिका मैं करवाऊंगा, जैसे ब्रेन के लिए शंख पुष्पी, आप जितने भी प्लांट लाएंगे वो मैं लाऊंगा। या तो आप तुलसी जी का लाएंगे, नहीं, वेद सर नहीं खरीदेंगे, ये मेरी तरफ से लगेगा, मैंने प्रॉमिस किया। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। Very good evening to all of you. I now welcome Dr. Ved Prakash, who is, आप सभी जानते हैं already इनको, who is head of the Department of Pulmonary and Critical Care Medicine. And इनके बारे में introduction जो लिखा है बहुत कम है already. So he has been former deputy medical superintendent, former deputy registrar, former OSD, COVID control UP government, member UP government advisory board for COVID guidelines, and he has many awards with himself like Young Achievers Award, Corona Warrior Award, UP Ratan Award, and several other awards from Honorable Governor, Honorable Chief Minister and Deputy Chief Minister, Government of Uttar Pradesh. So I now welcome Dr. Ved Prakash to deliver his lecture on fungal infections in ICU. Thank you, chairpersons, for very nice introduction. अभी प्लांट्स की बात हो रही थी, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोगों ने एक प्रोग्राम चला के रखा है सर,
जो भी आईसीयू में ज़्यादा ऑक्सीजन का उपयोग करके जाते हैं और डिस्चार्ज होते हैं पेशेंट्स हमारे यहाँ, उनको हम लोग एक पौधा देते हैं अपनी तरफ से, और उसका टाइटल रखा जीवन दान संग पौधा दान। और उनसे हम लोग एक ये कमिटमेंट भी लेते हैं कि एक हम दे रहे हैं, 9 आप लगाएंगे, कम से कम 10 ऐसे पौधे लगाइए जो ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। और सुन लीजिए उसको भी, जब भी नेक्स्ट विजिट पे आएंगे तो आपको उसका फ़ोटो लेकर के आना होगा कि पौधे कहाँ तक पहुँचे, उसकी मॉनिटरिंग भी हम ही लोग करते हैं। तो ये प्रोग्राम लगातार हमारे यहाँ पे चल रहा है। इसमें मेरी तरफ से अपील भी है कि जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहें, जो पौधे देना चाहें वो दे सकते हैं। और हमने यहाँ पे एक नर्सरी बना के रखी हुई है, तो देवेश सर मैं आपका वेलकम करता हूँ कि आप उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहें, चाहे मेडिसिनल प्लांट्स, और दूसरा जो ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले प्लांट्स हो सकते हैं उन पे हमारा फोकस रहता है, जिसमें पीपल के पौधे और जितने भी ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए जो प्लांट्स हो सकते हैं उनको हम लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो आप इसमें जो कंट्रीब्यूट करना चाहें कर सकते हैं आगे के लिए। हाँ, आप इंचार्ज हैं, आप तो हमारे भी इंचार्ज हैं। आप जब हाई कोर्ट के इंचार्ज रह चुके हैं तो उससे तो सब नीचे ही हैं, तो हम सब के आप इंचार्ज हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच। अब ये लास्ट सेशन है, अब मुझे इसमें इन्होंने दे दिया है, दिन भर तो ये लोग दौड़ाते रहते हैं मुझे कि इधर जाओ उधर जाओ, फिर एक सेशन भी लास्ट में दे देते हैं। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि जहाँ पे इतने माइक्रोबायोलॉजिस्ट से लेकर के और यूरोलॉजिस्ट, फार्माको और हमारे गुरु टीचर ऑफ टीचर्स प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सर जब सामने हों तो एक बड़ी चुनौती मेरे सामने आ जाती है कि अब क्या जस्टिफाई करें, क्या कहें। और इतना सब जब पढ़ाया जा चुका होता है तो बचता भी बहुत कम ही है लास्ट वाले स्पीकर के लिए, तो उसे जस्टिफाई करना और लोगों को अवेक रखना और रोके रखना, ये और चुनौतियां साथ साथ इसके पीछे लग जाती हैं। तो जो मेरे गुरु हैं उनको मैं हमेशा याद करता हूँ, जिन्होंने इस सफ़र को टीबी से लेकर के और यहाँ तक का सफ़र जो पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर तक का सफ़र है, टीबी एंड चेस्ट, फिर पल्मोनरी मेडिसिन, फिर पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन, फिर इसमें डीएम का कोर्स, और अब आगे की और उन्होंने एक चुनौती हम लोगों के लिए रख दी कि लंग ट्रांसप्लांटेशन। जैसा कि अभी वाइस चांसलर मैडम ने कहा, हम लोग सर आपके इस ड्रीम को आगे ले जाने के लिए पूरी टीम लगातार प्रयास करती रहेगी। चूँकि ये हमारा डिपार्टमेंट तो कमिटेड है ही, लेकिन ये विषय कोलैबोरेटिव है, रादर के एक डोमेन एक विभाग का नहीं है। तो हम लोग सर्जिकल साइड के जो डिपार्टमेंट्स हैं इसमें जो इन्वॉल्व होंगे, हमारे रेस्पिरेटरी मेडिसिन, हमारे मेडिसिन डिपार्टमेंट और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है ये फ्यूचर है। फ्यूचर अगर हम कहें मेडिकल टूरिज्म का फ्यूचर, तो भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ही है। अगर सही मायने में हम लोग चाहते हैं कि 21वीं सदी का भारत ऐसा सशक्त भारत हो जहाँ पे अभी तो गरीबों की ही लाइन लग रही है मेडिकल टूरिज्म में, जो गरीब देश हैं, लेकिन अमीर देशों को अगर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उनकी लाइन लगवाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक बहुत ही बेहतर प्रयास हो सकता है। और सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल की तरफ, क्योंकि बहुत महंगा है। मेरे एक रिलेटिव का 8 करोड़ में हुआ था लंग ट्रांसप्लांटेशन क्लीवलैंड क्लिनिक पे, और ये आज से 8 साल पहले की बात है। अभी भी वो ठीक है, स्वस्थ है। 8 करोड़ रुपए में हुआ था। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर अंग्रेज़ जो वहाँ के लोग हैं अमेरिकन, उनका हम 4 करोड़ में कर दें और हम अपने यहाँ पे 50 लाख में कर देंगे तो 3.5 करोड़ बचेगा एक पेशेंट पे। तो हम लोग सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल की तरफ भी इन इंस्टीट्यूशंस को, इन सेंटर्स को इसमें बढ़ा सकते हैं। और मैं अपील भी करना चाहता हूँ आप सबसे इस माध्यम से कि 100% रजिस्ट्रेशन, जब भी ब्रेन डेड की स्थिति बने हम सब की, तो ऐसे में हमारे ऑर्गन्स डोनेट होंगे
ऐसा प्लेज करने का एक प्लेटफॉर्म भी हम लोगों को विकसित करना चाहिए और नेशन वाइड अपील इसमें हम लोग आगे इसको बढ़ाएंगे। आपके माध्यम से, आपके सहयोग से इस प्रोग्राम को भी हम लोग आगे रखने का काम करेंगे। सो राजेंद्र प्रसाद सर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस ऑलवेज एंड ऑलवेज। जब मेरे रेजिडेंसी के दिन थे तब से लेकर के आज तक आपने हमेशा ही प्रेरणा देने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया और नई नई चुनौतियां हम लोगों के सामने रखने का काम भी किया और उसका रास्ता भी बताया। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस ऑलवेज। You all are aware about the factors contributing to fungal infections like complex medical and surgical issues, disruption of natural barriers। अभी natural immunity की बात हो रही थी। natural जो process है उसको जब भी हम लोग deviate करेंगे nature से तो कहीं ना कहीं हम लोग एक ऐसी चीज़ों को invite करेंगे कि जहाँ पे हम लोग फंसते ही जाएंगे। तो nature के करीब रहना है, मिनिमम सपोर्ट देना है, लेस इज मोर। ये वाला फार्मूला हम लोग बहुत समय से अप्लाई कर रहे हैं अपने आईसीयू में। मेरी सारी टीम इस बात को जानती है कि डिसरप्शन नहीं होने देना है, नेचुरल इम्यूनिटी को रेस्टोर करना है, जल्दी से जल्दी नेचुरल बैरियर्स को, नेचर के जितने भी हैं, चाहे पेरेंटल न्यूट्रिशन से एंट्रल पे शिफ्ट करना हो अर्लीस्ट, और या फिर एनर्जी देनी हो, एनर्जी इन फॉर्म ऑफ प्रेशर्स, एनर्जी इन फॉर्म ऑफ वॉल्यूम ऑन द वेंटिलेटर। सो लेस इज मोर, दिस इज द डिक्टम एट पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन। एंड आई एम हैप्पी टू अनाउंस कि हम लोगों ने 35% सर्वाइवल रेट से शुरू किया था इस आईसीयू को, और आपको खुशी होगी और आई थिंक ये प्राउड मोमेंट भी है कि 85% डिस्चार्ज रेट KGMU का हमारे आईसीयू का इस समय है। लार्जेस्ट आईसीयू है कंट्री का। और वैप जो सबसे बड़ा किलर है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, उसकी जो इंसिडेंस है वो लेस देन 10% है, जो कि अमेरिकन स्टैंडर्ड्स को मैच कर रही है। तो मैं इसके लिए अपनी पूरी टीम को धन्यवाद भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ कि जितने भी हमारे स्वीपर से लेकर के वार्ड बॉय से लेकर के टेक्नीशियन, नर्सिंग ऑफिसर्स, हमारे रेजिडेंट्स, फैकल्टी रात दिन इसको अचीव करने के लिए यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि मैडम ने जो भरोसा रखा है हम लोगों पे, शायद इस डेटा को देखकर ही उन्होंने भरोसा रखा है कि नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड फॉर लंग ट्रांसप्लांटेशन। दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज आई हैव टेकन इनटू। जो मुझे अब तक मिला उसमें सबसे बड़ा चैलेंज हम लोग इसको मानते हैं। तो मैं इस मौके पे आह्वान भी करूंगा कि हमारी रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट की टीम, हमारे सर्जिकल टीम्स, हमारे मेडिसिन के टीम्स और जो भी एलाइड एंसिलरी डिपार्टमेंट्स हैं, सबका सहयोग इसमें मिलेगा। फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, ऑल। और एक ही छत के पास वहाँ पे किडनी का ट्रांसप्लांट भी होता है। डॉक्टर विवेक हमारे बीच में हैं, चेयर कर रहे हैं। आप किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हैं, आपने कई सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांटेशन यहाँ पे किए हैं। सो थैंक यू डॉक्टर विवेक। लिवर ट्रांसप्लांट हमारी सक्सेस स्टोरी है KGMU की। 25 से ज़्यादा लिवर सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट हो चुके हैं एंड पेशेंट आर डूइंग रियली वेरी वेल। सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स lung transplantation and heart transplantation also. So we need to refresh all of you about the multiple invasive procedures in ICUs and prolonged antibiotic use. These are the factors contributing and alarming increase in incidence of fungal infections. So we need to refresh all about the classification. So this is about morphological classification. We have molds. In the category of molds, we have aspergillus infections and dermatophytes in this group, and yeast infections like Candida, Cryptococcus, and Malassezia, and dimorphic molds and yeast infections are also very much common nowadays, and histoplasma and
these infections are alarming these days. Microbiology department जो लगातार हम लोगों के infections को देखते हैं, so they can also validate this data. So burden of fungal infections in ICUs, there is a study, international study on the prevalence and outcomes of infections in ICUs, and they have 14,414 पेशेंट इन्होंने एनरोल किए इसमें, जिसमें 1,265 participants from ICU from all over the globe. 75 countries have participated in this study, and 19% of all infections in the different ICUs across the globe. So 19% of pathogens isolated in ICUs patient were fungus, and most common was Candida species. That was 17%, followed by Aspergillus species. So this is the prevalence of fungal infections in ICUs, and we all are aware that we are facing the deadly fungus in our ICUs. So bloodstream infections in ICU, there is a study in Australia, this acquired bloodstream infections in ICUs, and the estimate is about 15.5%. And fifth most common microorganism isolated in all kind of infections. So this is the scenario, changing scenario we can say, and initially it was 80% Candida albicans. If I am right, Dr. Gupta is here, वो देख सकते हैं, बता सकते हैं कि पहले हम लोग एल्बिकेंसी पढ़ते थे, एल्बिकेंसी देखते थे, 80% एल्बिकेंस होता था, और अभी जो सिनेरियो बदल रहा है, चाहे ये ओवर यूज ऑफ एंटी फंगल्स हो, अभी 50-50 मैं कहूँगा कि 90 जो 80% से जो एल्बिकेंस है वो 50% पे आ गया, और 50% नॉन एल्बिकेंस ग्लोबली ग्रो कर रहे हैं अभी के इसमें जो सिनेरियो हैं, जो करंट सिनेरियो है. सो दिस इज द चेंजिंग एपिडेमियोलॉजी बिकॉज ऑफ ओवर यूज ऑफ एंटी फंगल्स. So this is the study in 1980 to 90. So here the incidence was albicans 76% and non-albicans were 24%. And in this study in 1997, between 97 to 2000, and we have seen the trend changing to Candida albicans 50% and non-albicans also 50%. So non-albicans is nowadays is common like Candida glabrata, Paraspillosis, tropicalis and cruzi. So tropicalis is also nowadays increasing in Indian scenario also. If we see the Indian data, we found Candida tropicalis as most common pathogen in the among all kind of fungal infections. And this is the study from India and Pakistan that is showing commonest, that is Candida tropicalis, and in all over the Asia, this is Asian study, here also the Candida albicans is still there. So PGI Chandigarh and Sterling Hospital at Ahmedabad participated in this study from India. When we
say it's invasive. Invasive candidemia कहने के लिए we have candidemia with burns, candida, colonization, central venous or urinary catheters, chemotherapy, corticosteroid use, diabetes mellitus, graft versus host disease, hematopoietic stem cell transplant, hemodialysis, high severity of illness, immunosuppression, liver failure, major surgery, malignancy, mucosal damage, necrotizing pancreatitis, neonates, neutropenia, prolonged duration of ICU stay, prolonged ventilation, renal failure, solid organ transplant, and structural lung disease, and total parental nutrition. So these are the common risk factors. We all know about these risk factors. The clinical picture of invasive candidiasis, it varies from minimal fever to a full-blown sepsis syndrome that resembles severe bacterial infections. There may be eye lesions, skin lesions, and muscle abscesses. So these are all kinds of pictures for candida infection. And what are the diagnostic tests? So these are the directed biopsy of site of involvement often leads to a definitive diagnosis. And then we have blood cultures. These are the most straightforward method to detect candidemia. But what is the challenge? There is positivity in only approximately 50% of patients. So this is the challenge about the sensitivity of blood cultures, and slow method for detection of invasive candidiasis, and cannot identify upcoming species like C. auris. That is Candida auris is upcoming new variant. Serological testing is also very important. We have beta D glucan, then we have menin antigen, anti-menin antibody, then nucleic acid PCR test nowadays, and galactomenin. So these are the tests, and this is the scoring system to predict the candidal infections. This is the pre-test probability score for invasive candidiasis, like candida score. That include parental nutrition, surgery, multifocal colonization, and severe sepsis. So this is the score, and a score if more than 3 is considered positive. And this is the another scoring system, that is Ostrowski. That is for ICU patients, Ostrowski clinical prediction rule. That is mechanical ventilation for more than 3 days, CBC for 1 to 3 days, and at least one of the following, like TPN 1 to 3 days, and dialysis days 1 to 3, and major surgery days more than 7, pancreatitis by CT or lipase more than 1000 international unit, day 7 or more, steroid use, 1 dose of prednisolone equivalent to 20 mg, day 7, other immunosuppressive drugs more than 1 dose, and days 7 to 0. This identifies patient at increased risk of ICU in medical and surgical ICUs for invasive candidiasis. So what should be the approach to treatment? How to treat these infections? One is definitive, another is preemptive. In definitive, we have the positive cultures. In preemptive, we have the positive serology but negative culture, and then we have to give prophylactic treatment for the patients with the high risk group patients. So definitive treatment in patient with definitive diagnosis of candidiasis, all catheters including central venous catheters should be removed and changed. Invasive candidiasis such as endophthalmitis should be excluded. And for preemptive,
that if there is sign and symptoms and positive serology, then we consider it as preemptive. Considered in high-risk patient without a definitive diagnosis of infection, and use of fluconazole has shown, in high dose, has shown to reduce the incidence of definitive candidiasis. So no improvement of outcome is documented so far. So this is the prophylactic treatment in the high-risk group patients need to be given prophylactic treatment, and we have recommended in patients undergoing bone marrow transplantation and recommended in patient receiving chemotherapy for hematological malignancies, recommended in patient with solid organ transplantation, and can also be used in non-neutropenic at high risk intensive care patients, and there is no benefit of prophylaxis documented in other than these cases. So IDSA, Infectious Disease Society of America recommends in confirmed candidiasis cases, we need to look for neutropenia in neutropenic patients, and non-neutropenic patient we have to treat differently. So if there is confirmed invasive candidiasis, that need to be treated with echinocandins upfront. And we have caspofungin, we have micafungin and endulafungin with us, and this is the initial therapy for confirmed cases. Then after 5 days of echinocandins, because in resource limited country we have the poor population and every patient cannot afford it, so we have the option for these patients. If we see improvement in clinical condition of patient after 5 days of echinocandin treatment, then and the affordability is low, then we can switch to fluconazole as alternative therapy. And also in the patient with drug sensitivity positive for fluconazole, we can use it upfront. So fluconazole IV oral, that is in high dose and at 800 mg, and maintenance dose of 400 mg daily, and acceptable alternative of echinocandin, we can try this molecule in selective patients only. So this is the how to switch to fluconazole, that is recommended for clinically stable patients, one, and negative repeated blood cultures after antifungal therapy. We have to monitor about the antifungal treatment in alternate days. एक दिन छोड़ करके हमें कल्चर्स लगातार कराने पड़ते हैं इसके मॉनिटरिंग के लिए, and isolate susceptible to fluconazole, we can use it upfront, and transition within 5 to 7 days we can keep. So how to switch from amphotericin B to fluconazole? That is lipid formulation of amphotericin B is the alternative treatment if intolerance or limited availability or resistance to other antifungal agents, and the dose is 3 to 5 mg per kg daily. So lipid formulation of amphotericin B is also available with us. So how to transit, how to switch from ampho B to fluconazole? We need to review the patient and recommended for clinically stable patients only, and isolates susceptible to fluconazole, and negative repeat cultures on antifungal therapy, and transition after 5 to 7 days is recommended. So lipid formulated ampho B is drug of choice for suspected azole and echinocandin resistance also. In resistance cases with candida infections,
we have to give M4B upfront in these patients, and dose is 3 to 5 mg per kg daily. So we have when to use voriconazole. We are using voriconazole in ICUs very frequently. So when the dose for voriconazole is 400 mg, that is 6 mg per kg twice daily for 2 doses, then maintenance dose is 200 mg, that is 3 mg per kg twice daily. That is effective for candidemia and having a little advantage over fluconazole as initial therapy. So when to do blood cultures for monitoring, we have to monitor these patients of invasive fungal infections for a longer period. So we need to perform every day or every other day cultures for these patients. So we need to follow up with the blood cultures and establish time point of candidemia clearance. So duration of therapy, if we get negative blood cultures, then we require to give this treatment. We have to continue for 2 weeks more after negative culture. And 2 weeks after clearance of Candida species and resolution of symptoms and no obvious metastatic complication, we have to see for stopping the treatment. So if culture sensitive negative but serology is still positive, then we have to give empiric therapy for invasive candidemia, and preferred empiric therapy for suspected candidiasis in non-neutropenic patients in ICUs is echinocandins. So the echinocandins are the drug of choice in these cases. We have caspofungin loading dose of 70 mg, then 50 mg daily, then micafungin we have 100 mg daily, and endolafungin we have loading dose of 200 mg, then 100 mg daily, and duration of therapy is not less than 2 weeks. So when to stop empirical antifungal therapy? For patients who have no clinical response to empiric antifungal therapy at 4 to 5 days and who do not have subsequent evidence of invasive candidiasis after the start of empiric therapy, or have a negative non-culture based diagnostic assay with a high negative predictive value. So in these patients we can stop the treatment. No need to treat colonized candidiasis. I can say a urologist is here. He can also validate my thought that urinary tract infections due to candida infection, that is most of the time that is the colonized infections. So urinary tract infections due to candida species, elimination of predisposing factors such as indwelling catheters is recommended whenever feasible. Then treatment with antifungal agents is not recommended unless the patient belongs to the group of high risk or dissemination. And with high risk group, we have to give, in high risk group, we have to include neutropenic patients, very low birth weight infants, and patients who will undergo urologic manipulations. So these are the subset of patients in which we have to consider the treatment. Otherwise, we will not give in each and every colonized patients. So neutropenic patients and very low birth weight infants should be treated as recommended for candidemia, and patients undergoing urologic procedures should be treated with oral fluconazole 400 mg, that is 6 mg per kg daily, or amphotericin B deoxycholate in 0.3 to 0.6 mg per kg daily for several days before and after the procedure. So these are the subset of urinary patients which require the treatment. So nowadays the threat is aspergillus. So aspergillus in ICU we are dealing with now in daily practices. Aspergillus is commonest among molds infections. In mold infections it is around 82%. This 82% amongst the all mold infections, that is
of Aspergillus infection in ICUs. So the clinical spectrum of pulmonary aspergillosis is, so what is the spectrum nowadays? And the pulmonary and paranasal sinuses aspergillosis, and then the decreasing order in this group, we have cavitary chronic pulmonary aspergillosis, then fibrosing, then necrotizing, then invasive pulmonary aspergillosis. So these are the pictures of scans in these patients, and these are the hypersensitivity subset of patients in which we have to consider these treatments. So lungs are the most common site for invasive aspergillosis, and sign and symptoms like fever, chest pain, shortness of breath, cough, and hemoptysis, and we have the classical triad of sign and symptoms with us. There is a fever, hemoptysis, and pleuritic chest pain. So these are the symptoms when we suspect. If we have these symptoms, we have to suspect these infections. And this is the these are the some sign of CT scan. We see like halo sign in these patients. This is a halo sign. There is reverse halo also that will come in next slide. And there are peribronchial consolidations with cavitations with centrilobular nodules and air crescent sign in CT scan. So we can see this. Then how to confirm the diagnosis by direct examination of respiratory specimens, and we can find the organisms can be as narrow as 3 to 6 micron wide, septated hyphae with dichotomous acute angle of 45 degree branching. So this is for microbiologists to confirm. Then the serological tests like galactomannan antigen detection, the serum cutoff is more than 0.5. Then BAL, this FDA cutoff is more than 0.5. Then aortic cutoff is more than 1. So and then beta glucan assay. We have beta D glucan assay, and that is non-specific and positive in other fungal infections also. And then we have the culture. Culture is the gold standard, and we also have the PCR that is highly sensitive but low specificity. So these are there, but gold standard is still the culture of these fungal infections, but the sensitivity is low. Around half of the cases we are not having these cultures positive. In primary treatment with voriconazole is strongly recommended with high quality evidence of this is the IDSA recommendation. Alternative therapies, we also have like liposomal lympho-B is a strong recommended with moderate quality evidence. Then other lipid formulations of lympho-B recommended with moderate quality evidence. Then isavuconazole is also coming up with recommendations with moderate quality evidence we have. Then the combination antifungal therapy in some subset of patients, we also have the regimens in fungal infections also. In selective patients, for selective patients, we have to combine the antifungal therapy with voriconazole and then echinocandin. May be considered in selected patients and documented with documented invasive aspergillosis evidence. So the duration of treatment, as you know, the minimum
duration is 6 to 12 weeks. So we have to give for so much longer time. And then we have the, I think, last mucorrhizal infections. We have heard about black fungus, mucor infections during the COVID pandemic. So this is also very much cause of concern during the pandemic. So this is the clinical presentation. We have mucormycosis can be classified as rhinocerebral, pulmonary, cutaneous, gastrointestinal, disseminated, and uncommon presentations. And in pulmonary mucormycosis, the diagnosis of pulmonary mucormycosis is difficult because of presentation does not differ from pneumonia due to other angio-invasive modes. So that is the similar to invasive aspergillus, also give the similar picture in CT scans. So it is very difficult to diagnose by the imaging, but the most common abnormalities are focal consolidation, masses, pleural effusions, or multiple nodules. The presence of pleural effusion or more than 10 nodules may independently predict mucormycosis and help differentiate from aspergillus in immunocompromised patients. So reverse halo sign with more than 10 nodules. So this is the confirmatory for this mucormycosis. And a reverse halo sign, then cavitary lesion with or without ear crescent sign. And in macroscopy, we find non-septated hyphae in these infections. And then how to treat these mucor infections, what is the treatment of choice? So amphotericin B is the treatment of choice molecule, and we have seen कि कितनी कमी हो गई. एम्फोटेरिसिन भी किस तरह से मिल रहा था, कितना ब्लैक हुआ, ब्लैक फंगस की वजह से कितना ब्लैक में बिका है एम्फोटेरिसिन भी, हम सब ने इसको देखा है. सो दिस इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस. मुझे लगता है कि कोई भूल नहीं पाएगा कि व्हाट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ब्लैक फंगस. तो ब्लैक फंगस सबसे ज़्यादा देखने को यहाँ मिला तो कोविड में मिला, और उसके लिए जो ब्लैक हुई तो एम्फोटेरिसिन बी ब्लैक में बेची गई. तो मुझे लगता है कि सबको इसको याद होगा अभी तक. So drug of choice for initial therapy, and then starting dose is 5 mg per kg daily of liposomal amphotericin B or amphotericin B lipid complex. Then lipid formulation delivers high dose with less nephrotoxicity. Nephrotoxicity is the cause of concern in these patients, and dose can be increased up to 10 mg per kg daily dosing. So step down therapy, we have posaconazole or ibosaconazole as broad spectrum azoles with after injectable amphotericin B, then available in parenteral or oral formulations, and can be used for oral step down therapy after response to liposomal ampho-B. Then posaconazole dosing is 300 mg every 12 hourly to the first day, then 300 mg once daily in rest of course. Then isavuconazole loading dose is 200 mg for every 8 hourly to 6 doses, followed by 200 mg once daily dose. So this is the therapy. Then salvage therapy, continue therapy until clinical resolution, Candida score is more than 3. Then if this is there, then start antifungals. If not there, then no antifungal therapy is recommended. Then await blood cultures for ancillary tests. If it is positive, then continue antifungals and treat at least for 2 weeks. And if negative, then you can discontinue with the treatment. So what is the take-home message from this long, I think, long presentation?
The invasive fungal infections are a critical concern. In day-to-day practices, we are following the culture reports, we are following the patient, we are following the clinical picture, then serological testings, then serial culture sensitivity patterns. So this is the critical concern for all of us. Then immunocompromised patients are at higher risk. Proactive infection prevention strategies are of paramount importance in ICU care, and early detection and treatment are vital, and regular monitoring and surveillance of high-risk patients aid in early detection and management of infections, then selecting appropriate antifungal agent based on susceptibility testing and enhancing the treatment efficacy, and prophylactic antifungal therapy may be considered for high-risk patient in the ICUs. So these are the take-home points. So thank you for patient listening. Thank you, Professor Ved, for a very nice presentation on this fungal infection in ICU. It was very elaborate and very nice and crystal clear. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. I think Dr. Ved covered most of the fungal infections, and importantly Candida, Aspergillus mucorales. He talked about all species and most of the treatment. एक चीज़ जो मेरे ख्याल से that is more important about when we talk about fungal infections, especially in ICU, then prevention of fungal infections in ICU. How to prevent these infections, especially Candida, Aspergillus. So I think उस पर हमको ज़्यादा emphasis देना चाहिए, because Candida is usually endogenous infection. You get it from your own body. So cleaning of the patient, disinfection of the patient daily, that becomes very crucial, especially when you want to prevent this Candida infection. That is very important. And yeah, we have bundle care, we have cleaning strategies, and we have all the infection control measures which has been advised time to time from microbiology department also. We have the active surveillance also, and bundle care of all the lines, and as a whole, that is how we have swiping of patient. That is how we have brought the infection rate down. Yeah, that is the very much importance. And I can say, if we have curtailed down the infections in ICU, जो हमारे current rates हैं वैप के, खास करके वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, और आउटकम को अगर हमें इम्प्रूव करना है तो इसको कर्टेल करना ही होगा. और 10% से कम पर जो हम लेकर के आए हैं वैप के इंसिडेंस को, तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने इन सारी चीज़ को ट्राई किया है, और माइक्रोबायोलॉजी की टीम हमेशा बैकअप की तरह हमारे साथ खड़ी रही. तो मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ इसके लिए. Antibiotics, yes. Yes. Because whenever you give antibacterial, naturally the fungus they get chance to grow. And as you said that this is inside. So it is present inside, but it is hidden. But when you kill the bacteria, now this flourishes. And then to kill the fungus becomes very difficult. So that is how. For these infections to grow. That is happening. That is happening. और जो स्टीवर्डशिप की बात हो रही थी, तो हम लोग यही बात कर रहे थे उसमें कि कितनी जल्दी हम स्पेक्ट्रम को नैरो कर दें. ये हमारा एक बड़ा चैलेंज है, बड़ा कंसर्न है. और मैं तो कहता हूँ हमारी टीम को भी कि भाई 3 से 5 दिन मैक्सिमम आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूज़ करिए. इसके बाद अगर आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूज़ कर रहे हैं तो या तो आप दिखा दीजिए कि कल्चर में क्या आ रहा है, ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और स्पेक्ट्रम को नैरो करना है 3 से 5 दिन के अंदर. जैसे ही हम लोग यहाँ से रिपोर्ट लेते हैं, तुरंत हम लोग स्पेक्ट्रम को नैरो करते हैं. तो ये स्ट्रेटजी लगातार हम लोग कर रहे हैं. We also help you by giving you the antibiograms.
Yes, Every local year. antibiogram is of paramount Because you have importance, that and spectrum. microbiology department is doing the wonderful job and sharing all the time this what is happening in other ICUs also, in OTs, in wards, in operation theaters. So we are getting the local antibiogram. So that is very much important in deciding these treatment strategies. So thank you for being with us always. So we have the, I can say, big contribution from microbiology department in managing the ICU and reducing the incidence of sepsis, VAP, and increasing the outcome of ICU. So thank you very much. Thank you for. एक आपको अलग से सल्यूट करते हैं कि लास्ट लेक्चर में इतने लोगों को पकड़ के रखा। ये सब बड़ी चुनौती मेरे लिए थी। मैंने पहले ही इसलिए माफ़ी मांग ली थी कि भाई ये बड़ा चैलेंज है और ये नहीं हो पाए तो मैं क्या करूं इसके लिए फिर। अरे सर आप बैठे हैं इसीलिए सब बैठे हैं, क्योंकि पता नहीं कौन सा कमेंट सुनने को मिल जाए। और मुझे याद आता है सर बार बार कहते हैं हमेशा, राजेंद्र प्रसाद सर, कि 1000 days of reading books and 1 hour with your mentor is equal। तो इतने ऐसे मेंटर्स हमारे साथ हैं और लास्ट तक हैं, तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं सर कि हमारे साथ आप इतने समय तक रहे और अपने इंसाइट्स को शेयर करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक चीज़ कहेंगे हम, जो फंगल और स्किन इन्फेक्शन या किस तरह का हो रहा है उसके लिए नीम, एलोवेरा और हल्दी, ये आप लोग अगर रिकमेंड करेंगे तो मैं बता रहा हूँ कि 90% चीज़ें जो है हम इससे इंटरनली और एक्सटर्नली उसको ठीक कर सकते हैं। ये मेरी हम लोगों ने एक प्रपोजल और रखा था, पहले भी रखा था जब रविकांत सर थे यहाँ पे, अब मैडम आई हैं, अब हम लोग फिर से इसको पुश कर रहे हैं कि वी हैव टू डू स्टडीज़ विद अदर फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट्स। बिल्कुल सर। लाइक आयुर्वेदा एंड अदर पैथीज। वी आर हैविंग द ट्रीटमेंट for the ailments which we don't have in allopathies. So we need to collaborate and do collaborative research programs in future, and as rightly said by Professor Kushwaha sir, when we will come up with the data, then that will be the more acceptable not only in the country but around the globe. Yeah, so that's good. That will be the our next take in this regard. So thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you for this informative lecture, sir. Thank you, Dr. Bed, for very exciting lecture, I must say. And as Dr. Srivastava was talking about the other systems, you are also talking. So I can quote one of the studies which is published in one of the American journal, especially for youngsters, that they, when patients are treated in ICU for any reason, and they divided into, it was a RCT type of study, when divided into two groups, one with all the management, what is supposed to be due, and another with the same management, some prayer. When they say prayer, depending upon your faith, your religion, and wherever you feel is something is there supernatural. So what they found in this study, that the group who had some prayer as intervention, they have fared much better than the group without prayer. When I say prayer, it is not one. They say according to your faith, according to your things, you can do it. So that I think is a very valid point you put forward, that we have to, there's a lot of hidden things in these other systems, say IUs, and probably we have to discover them with their collaboration, and probably something very fruitful may come in our
This I have quoted is one of the American study where prayer is hardly done, but they did and they found the difference. Thank you, Ved, once again. प्रिवेंशन का बेस्ट मेथड ये है, सर ने भी बताया, आपने भी बताया, जो अल्टरनेटिव मेडिसिन है टोटल या प्रेयर है, बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाना है। अगर बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी, अच्छी रहेगी, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, फंगल इन्फेक्शन होगा, आपका डेथ रेट कम होगा, हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम होगा। तो टोटल थिंग्स जो आ रही है, इंक्रीज द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी, वॉट एवर द प्रेयर, एक्सरसाइज और अल्टरनेटिव मेडिसिन या प्लांट जो भी है, बॉडी। मैंने जो भी तुलसी और एलोवेरा बताया, वो भी एक तरह से इम्यूनिटी को बढ़ाती है। I am testimony to that. I am taking tulsi leaves and aloe vera every morning. Wake up first thing from last I think 16-20 years. कुशवाहा साहब, मैं 20 साल से वो सब तो एक्सरसाइज जो करता हूँ और ये भी लेता हूँ। और मुझे ये मेरे एक सीनियर ने सिखाया था। सीनियर ने तो ये सिखाया था कि रामदेव से तुलसी का वो मंगा लो और वो लार्क ले लो। मैंने कहा मैं रामदेव पर क्यों जाऊँगा, जब मेरे घर में स्वयं तुलसी का पत्ता है, स्वयं एलोवेरा है, तो मैं उसको यूज़ करूँगा। सो दैट इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ देयर आर वेरी नेचुरल मेथड्स टू इंक्रीज द इम्यूनिटी। आज देखिए, कभी आप सोचिए, हमारी बीमारी का जो मेन जड़ है हमारी लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल को बदलना कभी कभी बड़ा मुश्किल बात हो, लेकिन अगर लाइफ स्टाइल आप चेंज करें, मैं डॉक्टर साहब को जब भी मिलता हूँ तो यही कहता हूँ, भाई अपना वेट थोड़ा घटा लो। दिस इज अ सजेशन फॉर लाइफ स्टाइल। तो लेकिन सर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ये हंसते रहना, हंसाते रहना। मैं कोविड में अक्सर इम्यूनिटी बढ़ी रहती है। लाइफ स्टाइल की कब जरूरत पड़ती है? यू सी द कोविड, वी हैव सीन ऑल दोज रैम्पेंट सिचुएशन। हु डाइड इन कोविड? Majority people died in COVID who had some lifestyle diseases. Maybe diabetes, maybe hypertension, maybe renal failure, maybe many things. Death was not because of COVID, death was because of those diseases. But what COVID did, they have exaggerated. So I always say, जब आप बीमारी से बचने के लिए जब बीमार होंगे, तब ये मंत्र बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो बीमारी क्यों हो, मेरा कहने का मतलब, दिस इज समथिंग डिफरेंट देन सिंस वन ऑफ द आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट इज सिटिंग। सो आई एम नॉट आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट, आई एम कोर एलोपैथ। थैंक यू। दिनचर्या बता रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगी। सुबह उठते ही कोशिश ये करिए कि 5-6 किलोमीटर आप वॉक करिए, और इतने से आपका सब चीज़ें कंट्रोल रहेगा। 5 तुलसी की पत्ती, 5 नीम की पत्ती जरूर खाइए, और खाने को चबाइए, खाने को पीना है, पानी को खाना है, ये आप मिशन रखिए। इतना अगर करेंगे, और हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच डॉक्टर वेद साहब ने हमें ये काम सौंपा। थैंक यू सो मच। Okay, thank you, sir, for such a nice words. Now I would like to request Professor Rajendra Prasad, sir, to come on the stage and facilitate our speaker, Professor Ved Prakash, sir. Yes, sir. Okay, I request Dr. SNS Yadav, sir, to come on the stage, please. Now, I would like them to facilitate our chairpersons, Dr. Kushwaha, sir. Dr. Prashant Gupta, sir. पीछे सब पीछे बैठा है, पीछे बैठना
Dr. Nikhil Gupta, sir. Dr. Vivek, sir. Now I would like to invite Dr. Sachin Kumar, sir, Assistant Professor, Department of Pulmonary and Critical Care Medicine, to deliver vote of thanks. थैंक यू शुभ्रा। हमारा विभाग हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सेप्सिस जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अवेयरनेस और एकेडमिक सेशंस ऑर्गेनाइज करता रहा है। इस वर्ष भी हमने इसके बारे में विस्तृत चर्चा की और सेप्सिस अपडेट 2023 का अब समापन के दौर में प्रवेश करा दिया है। मैं इस सफल आयोजन के लिए हमारे विभागाध्यक्ष प्रोफेसर वेद प्रकाश सर एवं हम सभी के गुरु टीचर्स ऑफ टीचर्स प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सर को बधाई एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं वीसी मैम का, जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर इस कार्यक्रम का इनॉग्रेशन किया। मैं धन्यवाद देता हूं गेस्ट ऑफ ऑनर अमिता जैन मैम, प्रोफेसर विनीत शर्मा सर का, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय इस प्रोग्राम के लिए निकाला। मैं धन्यवाद देता हूं सभी स्पीकर्स एवं डेलीगेट्स का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करके इस आयोजन को सफल बनाया। मैं धन्यवाद देता हूं अपने सभी सीनियर्स, सीनियर रेसिडेंट्स, जूनियर रेसिडेंट्स, ऑफिस स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ्स एवं सभी कर्मचारीगणों का, जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं धन्यवाद देता हूं सेडना, एलनिश कंपनी एवं कपूर स्टूडियो का, जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर इस कार्यक्रम को सफलता तक पहुंचाया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। I will take this opportunity to felicitate our team, the team behind the event. That is the, I can say, that is of paramount importance. मैं तो कुछ भी इन लोगों को बता देता हूं और बता करके भूल जाता हूं सर। प्रसाद सर, जब हम लोग रेजिडेंसी में थे तो प्रसाद सर भी आराम से बैठा करते थे। मैं सोचता था कि ये ऑर्गेनाइजिंग वो हैं, पूरे बॉस हैं सबके, और सर चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं आज। मैं पूछता था सर, तो सर खुद बताते थे कि भैया हमने पहले ही जिम्मेदारी दे दी, अब सबको जिम्मेदारी मिल गई और सब अपना अपना काम करिए। और सर एकदम फ्री रहते थे सबको रिसीव करने के लिए, सबके साथ बैठने के लिए, सबसे बात करने के लिए। और टीम जो पीछे काम करती थी फिर उसे सर रिकॉग्नाइज भी करते थे। और हमेशा सर जो हैं, हम लोग जो जितना भी हमने सीखा वो सर के गाइडेंस में ही हम सब ने सीखा। कुशवाहा सर हमारे यहाँ पे हैं, सूर्यकांत सर हमारे हैं, सबकी गाइडेंस में हम लोगों ने यहाँ तक इसको लर्न किया। और नाउ आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि जो हमारी टीम है, जो बैक स्टेज टीम है, जो लगातार पूरा काम कर रही है, मैं इनवाइट करना चाहूँगा प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सर को, डॉक्टर SNS यादव सर को और RK दीक्षित सर को, कि उन्हें फेलिसिटेट करके उनका उत्साह बढ़ाएं। सबसे पहले जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हमारे डॉक्टर सचिन इज डूइंग ट्रिमेंडस जॉब। जितना भी मेरा प्रेशर मेरे ऊपर रहता है मैं इनको ट्रांसफ़र कर देता हूँ। सो ही इज़ डूइंग वेरी वेल। सो प्लीज़ फेलिसिटेट डॉक्टर सचिन फॉर वंडरफुल जॉब। Then we have
Dr. Hemant with us. He is final year DM, and previously he was heading the Department of Respiratory Medicine at Ramano Loya Institute. And मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो पल्मोनरी मेडिसिन एंड क्रिटिकल केयर का प्रोग्राम है, ये शायद RML में इसको रियलिटी बना पाएंगे। हाँ हाँ सर, आपने बिल्कुल बना दिया। मैंने भी कह दिया मैडम से। हाँ, डॉक्टर आरिफ जो हैं, ये कोई भी काम इनको दे दीजिए, ही इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, तो ये सारा काम कर देते हैं। डॉक्टर आरिफ 3rd ईयर हैं, फाइनल ईयर DM इस बार एग्जिट हो जाएंगे, तो प्रोबेबली ये हमारे साथ स्टे करेंगे आगे भी। इसके बाद 2nd ईयर DM के जो हमारे डॉक्टर अनुराग हैं, मेरी जो चिंता रहती थी कि लिखने पढ़ने वाले काम की, तो वो भी कम हो गई सर। एक नायाब हीरा हमें मिल गया है, ये अनुराग त्रिपाठी के रूप में, जिन्होंने पूरे लिखा पढ़ी का काम को संभाला है। जितने भी प्रोग्राम्स आप देख रहे हैं, सबको फाइनलाइज करने का काम अनुराग ने किया है। तो देन डॉक्टर मृत्युंजय इज ऑल्सो विद अस। मृत्युंजय जितने भी एल्गोरिथम हैं, जितने भी हमारे गाइडलाइंस हैं, उनको एनफोर्स करने के लिए सबसे अप्रोप्रिएट पर्सन है डिपार्टमेंट में, ICU में गाइडलाइंस को एनफोर्स करने के लिए। देन वी हैव डॉक्टर Deepak Sharma is 1st year DM, so he is also doing wonderful job। और जितना भी साइंटिफिक बैकअप है, ये लोग पूरा तैयार करते हैं। डॉक्टर शुभ्रा देखने में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन पूरा काम संभालती हैं। हमारे डिपार्टमेंट के साथ चाहूँगा, आ जाइए यहाँ पे। ये लगातार हम लोगों का जो काम है उसको पूरा संभालते हैं। DM के लोग जब इधर एंगेज हो जाते हैं तो यही संभालते हैं सारा। डॉक्टर शशांक, प्लीज कम फॉरवर्ड। ये शशांक हैं, ये भी हमारे सीनियर रेजिडेंट हैं, पूरा काम संभालते हैं। कुछ जूनियर रेजिडेंट दिख रहे हैं यहाँ पे? नहीं है कोई भी है। चलिए, हमारी सिस्टर इंचार्ज, जो सिस्टर इंचार्ज हैं, वो जितना भी काम अभी यहाँ पे काम हो रहा है सर, लेकिन पीछे ICU का कोई सफरिंग ना हो जाए हम लोगों के पीछे से, तो उसकी मॉनिटरिंग हमारी सिस्टर इंचार्ज करती हैं। आप आगे आ जाइए सिस्टर। सिस्टर सुशीला वर्मा हमारी ICU के इंचार्ज हैं, सिस्टर इंचार्ज, उन्हें फेलिसिटेट किया जाए। सिस्टर दूसरी वाली HDU वाली हैं कि नहीं है? आ जाइए सिस्टर। सिस्टर निर्मला बहुत सीनियर हैं और शायद अगले साल तक नहीं रहेंगे आप यहाँ पे, लेकिन आते रहिएगा, आप रिटायरमेंट की तरफ हैं। लेकिन हमारा पूरा काम, जितना भी डिपार्टमेंट का काम रहता है, वार्ड साइड में OT का काम, इंटरवेंशन का काम पूरा सुपरवाइज करती हैं निर्मला जी। और एक और इंचार्ज हमारी सबसे जो वो हैं सुपरिंटेंडेंट, कहाँ हैं क्या? हाँ, ये मर्सी सिस्टर हैं। मर्सी नाम भी है, और मर्सी इस डिपार्टमेंट पे भी इनकी हो रही है कि इतना अच्छे से मेंटेन करती हैं सर्विसेज को। इनके वहाँ पे चले जाइए आप, एक उंगली भी आप धूल नहीं निकाल सकते, एक भी। इतना साफ सफाई पसंद है इनको कि आप कोई भी वहाँ पे गंदगी नहीं निकाल सकते हैं इनके वार्ड में। तो HDU को पूरा मेंटेन करती हैं सिस्टर। हमारा ऑफिस, क्योंकि ऑफिस सबसे ज़्यादा सर क्या करते थे कि सबसे ज़्यादा डांट खाते हैं यही लोग, और सबसे ज़्यादा काम भी करते हैं यही लोग। तो हमारे राजन यादव, जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि मेरा गुस्सा इन्हीं पे उतरता है आधा, तो ये हमारी BP गोली पहले ही रख देते हैं ला करके कि BP गोली मिस ना हो जाए। तो ये राजन यादव हैं, कर्मचारी परिषद के भी नेता भी हैं पूरे के, और इनका बहुत फ़ायदा मिल रहा है पूरे विभाग को। ये डिपार्टमेंट जो ग्रो कर रहा है उसमें राजन यादव जी का एक बड़ा हिस्सा है, बड़ा रोल है। और हमारे दूसरे वाले आ जाइए आप भी, प्रवीण जी।
कहाँ है राकेश? प्रवीण जी पूरा सुबह से बैठ जाते हैं आकर के 8 बजे, ऑफिस 8 बजे खोल लेते हैं। राजन कहते हैं कि सर ये कुछ नहीं करते हैं। मैं कहता हूँ कि भाई 8 बजे आना और आके बैठना यहाँ पे। मैंने कहा जब तक दुकान खुलती है तो सबसे पहले जो बैठ गया थड़े पे आके वही मालिक है। तो ये प्रवीण मालिक इसलिए हैं कि ये सबसे पहले आके 8 बजे ही बैठ जाता, और ये भाग दौड़ का काम पूरा राजन संभालते हैं। तो इनमें लड़ाई रहती है। मैं यही कहता हूँ कि नहीं, इनको कुछ मत कहो, सही सुबह आना, सबसे बाद में जाना। इस ये काम ये पूरा संभालते हैं। जितना भी हमारा गोपनीय काम होता है वो भी यही संभालते हैं। अब ये डीएम वाले मुस्कुरा रहे हैं, इन्हीं के पास जुगाड़ लगाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक हमारे राकेश हैं, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट हैं कि नहीं यहाँ पे? आ जाइए आप भी। और वो कहाँ गए सबसे ज़्यादा डांटे जाने वाले हमारे ऑफिस के भाई? प्रभात है कि नहीं? आ जाओ भाई, आ जाओ। ये राकेश हैं, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट, जो निर्मला जी की जगह लेंगे जब निर्मला जी हमारी रिटायर होने की तरफ हैं। उन्हीं के साथ में काम यहाँ का समझ रहे हैं। ये हमारे सबसे ज़्यादा जो ऑफिस का काम है, कंप्यूटर का काम है, जितनी भी प्रेस रिलीज बनती हैं, जितना भी ऑफिस का काम होता है वो यही करते हैं, कंप्यूटर का। तो इनको रिकॉग्नाइज करना बहुत आवश्यक था। इसके अतिरिक्त देखिए, सबको रिकॉग्नाइज किया है हम लोगों ने, लेकिन सबको फेलिसिटेट करना संभव नहीं है, क्योंकि 256 लोग हैं सर डिपार्टमेंट के अंदर। लार्जेस्ट डिपार्टमेंट है देश का, और मैं कहूँगा कि पल्मोनरी क्रिटिकल केयर का कोई भी डिपार्टमेंट शायद ना स्पेस का, ना ही आईसीयू का, ना ही बेड स्ट्रेंथ का, और ना ही मैन पावर का इतना बड़ा शायद कोई होगा। क्योंकि सर आप तो देश भर के डिपार्टमेंट्स को देखते हैं, तो इस डिपार्टमेंट में सबको फेलिसिटेट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं सबका धन्यवाद जरूर करूँगा कि जिन्होंने इसको एक सक्सेस स्टोरी बनाया है। इस डिपार्टमेंट को जहाँ हम लोग 35% सर्वाइवल रेट था, वहाँ से 85% तक लेकर के आए हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि हमारे 256 जो लोग हैं, अब तक जितने 56 थे उसमें 256 हो गए हैं पूरे। एक मुझे छोड़ दीजिए उसमें से, तो 255 लोग रात और दिन मेहनत करते हैं इसको यहाँ तक मेंटेन करने के लिए, सर्विसेज को अपग्रेड करने के लिए। और शायद इन्हीं की ये जो मेहनत है जिससे कि आज एक बड़ी जिम्मेदारी और हम लोगों को मिली कि लंग ट्रांसप्लांटेशन एक बड़ा चैलेंज है, जो कि नॉर्थ इंडिया में मैं कहूँगा कि जो हमारे देश भर के जो विभाग हैं, जहाँ पे भी इनिशिएट किया गया, सक्सेसफुल नहीं हुआ। कहीं प्राइवेट में 1-2 जगह पे हो रहा है, कितना सक्सेसफुल है ये भी देखना बाकी है। लेकिन KGMU अगर सब कुछ सही रहा तो KGMU will be the first center in the public domain, in public hospitals, who will perform lung transplantation in near future. So this is the commitment you have heard from our honorable Vice Chancellor. मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हम लोगों के ऊपर भरोसा किया है। ये कोलैबोरेट एफर्ट रहेगा, इसमें सारे विभागों को हम लोग कोलैबोरेट करके आगे बढ़ेंगे। निश्चित ही अब तक के जो चैलेंज हैं कि गरीब को वेंटिलेटर देने का काम, 15 साल पहले इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था हम लोगों ने जब हम PGI में थे। आज ये रियलिटी है कि हम लोग जो एडमिशन करते हैं वो पैसे की वजह से नहीं करते हैं, उसका करते हैं जो बच सकता है, जिसकी जान बचाई जा सकती है, जो यंग है, वो हमारी प्रायोरिटी है। इसीलिए 85% हम लोगों ने इसको डंपिंग यार्ड नहीं बनने देंगे। मैंने इनसे कह दिया था, मैंने कहा इस ICU के बड़ा जो सेटअप है, बहुत बड़े रिसोर्सेज इसमें लगे हैं, इसको हम लोग इसलिए उपयोग नहीं होने देंगे कि वेंटिलेटर देना है फॉर सेक ऑफ प्रोलॉन्गिंग द लाइफ फॉर अनदर 1 मंथ और 2 मंथ। नहीं, हम लोग उनको देंगे जिन पे पैसा भले ही नहीं है लेकिन जान बचाई जा सकती है, और GDP में जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उन लोगों को हम इसमें प्रायोरिटी देंगे। तो आज ये रियलिटी बन चुका है कि पैसा ख़त्म हो जाए लेकिन वेंटिलेटर चलता रहता है। ये रियलिटी इस विभाग की है। लगातार इस पे हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं, चाहे हमें NGOs का सपोर्ट लेना पड़े, चाहे हम लोगों को कैसे भी करना पड़े, हम लोग ट्रीटमेंट बंद नहीं होने देते हैं। आपको
आश्चर्य होगा ये जान करके कि 11.5 महीने वेंटिलेटर पर एक गरीब रह करके गया है। इस विभाग के अंदर 11.5 महीने तक सस्टेन करना ट्रीटमेंट को, इसमें अफोर्डेबिलिटी भी एक्सप्लेन हो जाती है, इसमें वेब भी एक्सप्लेन हो जाता है, और इसमें जो कोलैबोरेटिव टीम एफर्ट्स हैं जो हमारे अन्य डिपार्टमेंट्स के, क्योंकि वो न्यूरोलॉजी का पेशेंट था, ये सारी चीज़ें अपने आप बोलती हैं इन आंकड़ों के साथ। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप सब ने जो कंट्रीब्यूट किया, आज आप हमारे साथ में बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद।